लार्ज कैप्स तक पेन रिस्ट्रिक्टेड है, मिड कैप्स बिल्कुल फ्लैट नोट पे आपको ट्रेड करते हुए इंडेक्स नजर आएगा और ब्रेथ भी ऑलमोस्ट इवनली पॉइज्ड है। 4 बढ़ रहे हैं तो 5 गिर रहे हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट इक्वल ब्रेथ है। तो ब्रॉडर मार्केट्स पॉकेट्स ठीक हैं, लार्ज कैप थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए। चलिए, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अब से सिर्फ 10-15 सेकेंड बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की पोस्ट आईपीओ 49th AGM उसकी शुरुआत होने जा रही है और हम लोगों ने चर्चा कर ली है वैल्यू अनलॉकिंग और मैनेजमेंट के आगे के प्लान सबसे इंपॉर्टेंट इस AGM में। Ladies and gentlemen, good afternoon. It is 2 p.m. and time to start the meeting. I welcome all of you to the 49th Annual General Meeting of the company. This meeting is held through video conferencing in compliance with the circulars issued by the regulators. The company has taken all feasible steps to ensure that the shareholders are provided an opportunity to participate in the annual general meeting. Adequate video conferencing facility and live webcast of the proceedings of this meeting have also been provided. Requisite quorum is present, and therefore I call the meeting to order. The register of directors, key managerial personnel, and their shareholding, the register of contracts or arrangements in which directors are interested, and a certificate from the secretarial auditor on employees' stock option scheme are available for inspection by the members. I wish to introduce, for the benefit of new members, my colleagues on the board of our company. Dr. Shumit Banerjee, Srimati Arundhati Bhattacharya, His Excellency Yasir Al-Rumayyan, Shri K.V. Chaudhary, Shri K.V. Kamath, Shri Haigriv Khaitan, Shri Dinesh Kanabar, Shri Nikhil Meswani, Shri Hital Meswani, Shri P.M.S. Prasad, Shri Anant Ambani, Srimati Isha Ambani Piramal, Shri Akash Ambani. All directors of the company are present at this meeting. Shri V. Shrikant, Chief Financial Officer, Srimati Savitri Parekh, Company Secretary, and Shri K. Seturaman, and the representatives of our statutory auditors and secretarial auditors of the company are also present at this meeting. Notice dated May 27, 2026, convening this annual general meeting and a copy of the annual report for the financial year ended March 31, 2026 have already been circulated electronically to the members of the company. A letter providing the web link of the annual report has been sent to those shareholders who have not registered by their email address. With your permission, I shall take them as read. The auditor's report on the standalone and the consolidated financial statements and the secretarial audit report of the company for the financial year ended 31st March 2026 do not contain any qualifications, reservations, adverse remark, or disclaimer. Accordingly, these reports are not required to be read out as provided in the Companies Act 2013. Now I will begin my formal address to the shareholders. My dear share owners, Namaste, and a very warm welcome to the 49th Annual General Meeting of Reliance Industries Limited this afternoon. At the very outset, on behalf of the entire Reliance family, including all our shareholders, let me congratulate
our beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, on achieving the stupendous feat of becoming the longest serving elected Prime Minister of India. Later this year, on the 7th of October, he will complete 25 uninterrupted years in public office, first as Chief Minister of Gujarat and then as Prime Minister of India. Over these years, the number of votes he has polled is by far the largest by any leader in the democratic world. We congratulate him on this remarkable milestone in public service. His vision for India's growth and the corresponding execution plan have been instrumental in the rapid all-around growth India has witnessed over the last decade. Dear friends, the past 6 years have been the most volatile and uncertain in several decades. COVID-19 increased geopolitical frictions, conflicts and wars, energy market disruptions, supply chain fragmentation, sharp swings in commodity prices, and shifting capital market dynamics have combined to create a far more unpredictable global operating environment than before. The war in West Asia added to these problems. However, tough times never last. Tough nations do. And India is among the most resilient nations in the world. With unity, positivity, and self-confidence, we have overcome the worst crisis in the past. Under the able, experienced, and far-sighted leadership of Prime Minister Shri Modi ji, India has handled the situation with exemplary competence, commitment, and wisdom. I can see India emerging much stronger in the fast-changing multipolar world. India will play the role of a balancer, a promoter of peace, and a friend to all. This is not merely my hope, it is my confidence and my conviction. Friends, the most important lesson for India from these volatile times is that we must intensify and speed up our efforts to make our country Atmanirbhar in critical resources and technologies. Maximum energy self-sufficiency and AI self-sufficiency must become our national missions. The success of these missions is critical to the success of Viksit Bharat. Reliance is playing a leading role in both the national imperatives. We have laid the foundation for Reliance to emerge as a leading deep tech and advanced manufacturing company. For this, we are investing an extraordinary amount in innovation and R&D effort. Here is proof that will make all of you proud. According to the latest report by the World Intellectual Property Organization, Geo Platforms has jumped from a rank of 340 to 20 in just 1 year in terms of the velocity of innovations through patents. This places Geo above several global tech giants and is the only Indian company in the top 20 in this elite league. Let us warmly congratulate our brilliant team of scientists, engineers, and innovators. They have made India proud. Friends, this is a landmark year for us, for not one but two reasons. Geo completes 10 years of stellar success, becoming the primary enabler of India's digital and AI revolution. Reliance Retail completes 20 years as a trailblazer, becoming the catalyst of India's organized retail revolution. In both businesses, we remain the unbeatable number one. Two phenomenal anniversaries, two spectacular transformations, and they affirm one abiding truth. When a patriotic, high-performance company consistently serves the aspiration of 1.5 billion Indians, there is no limit to what it can achieve. Dear friends, our founder chairman, Shri Dhirubhai Ambani, taught us that behind every obstacle is an opportunity. Through adaptability, reinvention, and strategic diversification, Reliance has consistently achieved long-term value creation at scale. As I address you today, I do so
in the firm belief that Reliance's best chapters lie ahead. Our foundations are strong, our strategy is clear, and the opportunity for growth in India and with India and for India is immense. Allow me to take you through the business and financial performance of Reliance. Dear shareholders, I am happy to share with you that Reliance posted a record high revenue, a record high EBITDA, and a record high net profit for the financial year 26 despite global challenges. The consolidated revenue stood at 11,75,919 crores, up 9.8% year on year. Despite the volatility, rapid scaling up of our retail and digital businesses played a key role in meeting our commitment to doubling RIL's EBITDA over 5 years. Our EBITDA for the financial year 21 was 97,580 crores, which rose to 2,07,911 crores for the year 26. Retail and digital businesses contributed nearly half of the financial year 26 EBITDA. Together, they are increasingly becoming the primary drivers of Reliance's future growth. The net profit for the financial year 26 stood at 95,754 crores, up 17.8% over last year. Friends, Reliance's contribution to India's inclusive economic growth and nation building remains unsurpassed. Reliance has maintained its top position in investing for India's growth. Reliance's capex stood at 1,44,271 crores for the year 26. Over the last 5 years, Reliance's capital expenditure has stood at a massive 6,48,428 crores, or over $68.4 billion US dollars, more than any other company in India. Reliance contributed almost one-third of the total capital invested by India's top 50 corporates during the last 5 years. Reliance's exports were 2,78,808 crores, which was 6.7% of India's total merchandise exports for the year. Reliance remained the largest contributor to the national exchequer, contributing 2,16,472 crores. With that, our cumulative contribution over the last 5 years to the national exchequer crossed rupees 9,78,000 crores, or in excess of $100 billion. Reliance's commitment to inclusive growth remains unwavering. Our CSR expenditure in the financial year 26 stood at 2,248 crores, the highest by a single Indian company. Importantly, these achievements are supported by a prudent capital allocation framework, proactive risk management, and a strong balance sheet and growing cash flows. This is reflected in steady improvement in Reliance's global credit rating by S&P to A- and by Moody's to Baa1, both of which are 2 notches above India's sovereign credit rating. Reliance ranks amongst the largest employers in India. Every year, we are consistently creating an increasing number of high-paying direct and indirect employment. Our digital and retail businesses have also catalyzed lakhs of micro-entrepreneurship opportunities. My dear shareholders, with great delight, let me tell you that the board of Geo Platforms has approved the draft red herring prospectus earlier today, and it will be filed with SEBI today. This is a deeply emotional moment for me, for the entire Reliance family, and for millions of its shareholders. The relationship Reliance shares with its shareholders is a deep and sacred relationship founded on pride, trust, respect, and shared growth. The commitment to shared growth was deeply personal to Dhirubhai. It is equally sacred to me. Imbibed in the same spirit, Isha, Akash, and Anant are heading the Geo IPO process and will lead the next generation of value creation opportunities in the future. The proposed listing of Geo will demonstrate to the world
that India can build technology companies of global scale, global capability, and global value. I assure you and all prospective new investors that a brighter future awaits Jio. Friends, 10 years ago, Jio began its journey with an audacious dream to remove digital inequality from India. At that time, voice was costly, data was expensive, speeds were poor. Jio made voice free, made high-speed data affordable, and Jio made digital life possible for every Indian. Jio empowered students to learn, small businesses to grow, families to connect, entrepreneurs to dream, and India to become the world's largest data market. Now Jio is preparing for its next big mission. Friends, in the past, I have spoken to you about the revolutionary power of artificial intelligence. I firmly believe that India should not be a mere consumer of AI created elsewhere. It must become a creator, adopter, and a global leader in AI. That is why we announced Reliance Intelligence last year as our newest growth engine. Our objective is to build a profitable AI infrastructure, platform, and services business, serving consumers, enterprise, and governments at scale. We set out a clear vision, identified the focus areas, and began building the right partnerships with Google, Meta, and NVIDIA. Now we are entering the next phase, execution, the details of which will be provided by Akash. A decade ago, Jio promised broadband connectivity to everyone, everywhere, and we delivered on that promise. Today, Reliance Intelligence promises AI to everyone, everywhere, and we shall deliver on this promise too. My dear shareholders, the Jio revolution is truly a result of courage, creativity, and commitment of thousands of young Indian engineers. Before Jio, many believed that India could only import technology from the world. Our engineers proved otherwise. They built, tested, deployed, and operated technologies at unprecedented scale. Today, Jio is not merely integrating technology, it is creating original technology. Reliance Intelligence offers an even bigger opportunity to our young engineers. They will get to work on problems of national scale and impact. They will build and deploy technology for 1.5 billion Indians. They will create India-born innovation that the world can adopt. To them I say, come build with us and build for India. Build AI that serves humanity. AI that is powerful, trusted, yet affordable. AI that is fluent in every Indian language. AI that empowers farmers, students, doctors, shopkeepers, workers, creators, and families. AI that improves efficiency while creating more opportunities to work and prosper for every Indian. AI that contributes to the productivity and job creation. We will give you the scale, the resources, the freedom, and the responsibility to solve some of the most important challenges of our age. I now invite Akash Ambani, Managing Director of Jio Platforms Limited. Akash leads Jio with passion, purpose, and a deep commitment to India's digital future to tell you about the spectacular progress made and the even more spectacular future that will unfold. Thank you, respected Chairman. Your words, your guidance, and the faith you have bestowed upon the team at Jio inspire us to scale greater heights. My dear shareholders, in 10 years, Jio has reached an operational scale that is simply extraordinary. The Jio user base has crossed 524 million, cementing our #1 position. Our 5G subscriber base has crossed 268 million.
the largest for any single country operator outside China, with 77 million net additions during this year. On fixed broadband, Jio AirFiber has continued to scale rapidly after becoming the world's largest fixed wireless broadband operator last year. With 13 million connected homes, Jio AirFiber is making reliable home broadband available across the country at unprecedented scale and speed. Total data traffic on Jio's network in FY26 stood at 241 exabits, growing 30.8% year-on-year, placing us amongst the largest data operators on the planet. The financial results of FY26 are a fitting tribute to this journey. Jio Platforms delivered revenue of 1,46,885 crores, growing 14.6% year-on-year. EBITDA reached rupees 76,255 crores, an 18.8% growth with an EBITDA margin improving by 190 basis points to 51.9%. For the first time in our history, profit after tax crossed rupees 30,000 crores, growing at 15.1% year-on-year. These numbers are proof of the trust India has placed in Jio. More importantly, they demonstrate that Jio's growth remains both broad-based and profitable. Dear friends, the next chapter of Jio's growth will be powered by 5 commitments. First, to make Jio True 5G the foundation of India's next big digital leap. Our dedicated network slicing will enable a new tier of high-performance connectivity for consumers and enterprises. Our cyclic beam-formed cell design significantly enhances coverage and capacity at high footfall locations. Our target is to migrate all subscribers to 5G by 2030, whilst advancing India's leadership position in 6G standards. Second is to take high-speed home broadband to every part of India through Jio AirFiber. Our new non-line of sight capability has dramatically expanded the reach of home broadband to locations where fiber was never viable. Over 90% of Jio AirFiber's installations are completed within 24 hours, and home connections are now growing at a phenomenal rate of up to 60,000 per day. Per capita data usage has reached 42.3 GB per month, one of the highest in the world. This number will only grow as Jio migrates more Indians to 5G and as AI-enabled use cases proliferate. Third is to digitize Indian enterprises and small businesses. The Jio PC initiative, which delivers cloud compute to small businesses through a simple set-top box, brings enterprise-grade technology within the reach of every micro, small, and medium business in India. Fourth is to ensure AI for everyone, everywhere. Jio is already embedding AI in consumer technology to deliver a smoother, smarter, and more personalized user experience. AI will make our networks more efficient, our homes more intelligent, our customer service more responsive, and our platforms more useful to every Indian. Fifth is to take India's technology to the world. The proprietary deep tech stack at Jio, built for 5G, fixed wireless access, and AI services, is now ready for deployment with international partners in select geographies. The technology we built to solve for India's challenges will also serve the world and become a key pillar of our export strategy. As we launch more value-added services such as premium 5G, AI bundle services, and enterprise solutions,
our ARPU will grow significantly. Dear friends, there's one more frontier I would like to mention: satellite communications. Geo connected India on the ground. Now we must connect India from the skies. There are still the remotest of villages, island communities, and border outposts where geo network cannot reach. For them, satellite connectivity will be the bridge to the rest of India. Geo is evaluating the development of a sovereign low Earth orbit satellite constellation for India. We are also partnering with the leading global constellation providers by leasing satellite capacity so that we can accelerate service availability while building our own long-term sovereign capability. This dual approach will enable Geo to meet India's connectivity needs faster while laying the foundation for the Indian satellite broadband platform of global scale. To anchor this ambition, Jio is also building its own ground station infrastructure in India. These ground stations will support our partner constellations as well as our own future satellites, creating an end-to-end satellite broadband ecosystem from space to ground. With this initiative, Jio is strengthening India's Atmanirbharta in space, placing India firmly on the global satellite broadband services map. All of these initiatives show that the best of Jio is yet to come. Dear shareholders, Reliance Intelligence, a new chapter in Reliance's deep tech evolution, was announced last year by our chairman. Today, I share with you the progress we are making in turning that vision into reality. Our first priority is to surmount the biggest hurdle for AI in India today: the scarcity and the high cost of compute. To address it, Reliance Intelligence is building India's sovereign AI backbone in Jamnagar. This cutting-edge infrastructure will be powered entirely by clean energy from Reliance's own solar generation from the Kutch Renewable Platform. The first 120 megawatts will be commissioned by the end of 2026. In addition, we are operationalizing an initial fleet of advanced NVIDIA GB300 GPUs. This next generation compute capacity is equivalent to more than 75,000 H100 GPUs on an AI inference basis. As the first 120 megawatts becomes fully operational, this capacity can scale over 2 lakh H100s equivalent GPUs. This capacity places Reliance amongst the largest AI infrastructure platforms being built anywhere in the world. When compute becomes affordable, innovation becomes inevitable. Friends, our second priority is partnerships. No company, however large, can build the future alone. The right path is to combine the best global technologies with Indian execution, Indian infrastructure, Indian domain knowledge, and India-first governance. Our Google partnership has deepened into a truly AI-first collaboration. For hundreds of millions of Geo users, Google AI Pro, powered by Gemini, is already accessible free of cost. Our second major partnership is a joint venture with Meta, which operationalizes the Llama open source AI for Indian enterprises. Reliance Intelligence will deliver sovereign hosting within India with full model transparency, portability that allows every enterprise to own its AI journey. Dear friends, Reliance Intelligence is building trusted, affordable, multilingual AI services designed to be accessible in 22 Indian languages. This sovereign, green, secure compute backbone will power India's first applications such as Jio Bharat IQ, AI Vyapar, Jio Health IQ, Jio Learn IQ, and Jio Krishi IQ. Jio Bharat IQ will make AI a companion for every Indian. AI Vyapar will help small merchants and businesses improve productivity, serve customers better, and compete with confidence. Jio Health IQ will bring intelligent healthcare support closer to every family.
Geo Learn IQ will help students learn in their own language at their own pace and with confidence. Geo Krishi IQ will help farmers make better decisions on crops, weather, resources, and income. Each of these services is designed around one simple principle. AI must be easy to use, trusted to rely on, and affordable for all. Together, these platforms will create a scalable foundation for consumer, enterprise, and government AI services. Friends, we are simultaneously building a world-class team of AI researchers and engineers, investing in India's AI startup ecosystem, and collaborating with leading Indian universities and research institutions. Within Reliance itself, the transformation is unmistakable. At Jio, AI native network management is already driving efficiency and quality at scale. At Reliance Retail, AI embedded merchandising and supply chain optimization is reducing waste and improving product availability for millions of customers. At JioStar, AI is powering the multilingual content creation. In our oil to chemicals operations, AI-driven process optimization is improving yield and reducing energy consumption. Dear shareholders, just as Jio made data extremely affordable for every Indian, Reliance Intelligence will disrupt AI economics by making it dramatically more affordable for every Indian by the end of this decade. The Jio Bharat platform has already proved that Jio can put capable smart devices in the hands of Indians at rupees 999. Now, with Network Edge AI inference, we will bring advanced AI experiences to affordable devices. When AI becomes ubiquitous and easily accessible, India will not merely participate in the AI century, it will lead it. Unlike global AI platforms that build in English and translate later, Jio is building AI natively in Indian languages. So a farmer querying in Marathi or a student in Tamil gets an AI that thinks and replies in their language. भारत का AI भारतीय भाषा में बोलेगा, भारत के दिलों को जोड़ेगा, भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलेगा. What we're building is an AI for India, AI by India, AI that will one day serve the world. To give you a glimpse of what lies ahead, we will now showcase some of Jio's latest innovations in AI. Across the world, AI has meant one thing, an app on your phone. And through it all, the phone call, the most natural thing we do, has stayed unchanged for decades. Today, Jio is doing something fundamentally different. Every day, Jio carries 20 billion minutes of voice, making us one of the largest voice carriers in the world. This is where India truly lives, talks, works, and connects. So we asked, why should AI sit outside the very place Indians interact the most? And so, we're building AI directly into the heart of the Jio network. No app to download, no number to add, available to every Jio customer in every Indian language. Let us just show you how we are working to bring intelligence to every Jio call. Just say, "Hey Jio," and your AI agent joins the call. For as long as you like, always, and only with your consent. The agent has multiple capabilities. It can transcribe calls. For example, on a conference call, it can identify up to 10 unique speakers and capture every word in their own language. It can summarize, sharing summaries, action items, and reminders with every participant after the call. It can act. Ask it to order food, book a cab, reserve a table, or set up the meeting you just agreed to, all done on the same call. Your own concierge on every call, launching for Jio's 500 million plus family later this year. Here's a quick demo.
Arjun Mehta is deep into a quarterly review call with 5 people when he realizes 3 colleagues who should be weighing in aren't on the line. He just says, Hey Gio, add Rohan, Priya, Kavya. Adding 3 more participants to the call. and they are dialed in, no fumbling for numbers, no separate conference bridge. Within seconds, the 3 of them are connected. Now, 8 people and the call is running long. Arjun can't take notes and stay in the discussion. So he says, Hey Gio, start transcribing this meeting. Transcribing the call now. every participant gets a notification that the call is being recorded and transcribed with consent and begins capturing in real time, identifying each of the 8 speakers by voice. Walking to the lift, tired, he says, Hey Gio, summarize the call for me and create action items for all. Summary being generated. clean minutes, the decisions and the action items tagged to each owner. His own 2 action items arrive as an SMS with a reminder already set. On the drive home, he calls his wife. Hey Gio, call Ria. Calling Ria. Hi. Hi, should I book a restaurant? Papa, it's Friday. So sorry, Myru. Papa forgot it's Friday. On the same call, he says, Hey Gio, order a margarita pizza. The AI call agent knows his usual outlet and saved address, asks the right 2 questions. You want regular or medium-sized pizza? How about adding Campa Cola? Yes, a medium-sized pizza with Campa Cola and place the order. Okay, your order has been booked and your total is 748 rupees. He confirms the price and places it. By the time he arrives home, the pizza has arrived and the family tradition continues. I now invite my colleague Kiran to join me. Thank you, Akash. Now let's talk about MyJio. MyJio is India's most used self-care app with over 60 crore users. For a decade, it has been a place you go to recharge or to check your balance. With AI, something fundamental has changed. Think of the most capable person you know, the one who doesn't need to be told every step. You say what you want, and they take it from there. This is what we call an AI agent. We are transforming MyJio from an app into a personalized Geo AI advisor and relationship manager. You no longer navigate MyJio. You say what you need, and MyJio starts working. Are you shifting to a new city? Don't click through the screens. Just voice your intent, and MyJio acts instantly. Here is a quick demo. Hey Vikram, how may I help you today? I'm moving to Pune next month. How can I transfer my Jio fiber? Got it, Vikram. I can move your whole JioFiber setup with you. What's the new address in Pune? B1204, Skyline Heights, Baner, Pune, 411045. Good news, that address is covered. Here's what I found. Pick an installation slot for the new place. 15th July morning works for me. Done. I've set everything in motion. Our agent Rajveer Sharma will contact you for transferring the JioFiber, and I ping you a day before the installation. You're all set? Anything else for the move, or shall I leave you to the packing? Traveling overseas? It finds the right roaming pack and sends real-time usage alerts. Here is a quick demo. Hey Vikram, tell me what you need and I'll take care of it. I'm flying to Italy next week. That sounds exciting. Italy is a great destination. To pick the right roaming pack, could you share your departure and return dates? 25th June to 5th July. Nice. That gives you 10 days in Italy. Here are the recommended packs that fit your window. Pick the one that suits how much data you need. Recharge for 1551. Perfect. I have completed your recharge. Your plan will auto-activate when you land in Italy. Have a great trip. Bought a new eSIM phone? It handles self-KYC and activates your phone in minutes. This is for every Indian in all major Indian languages, voice and text. As always, privacy stays at the heart of it. MyJio acts only with your consent. Every action is logged, and everything involving payment always needs your confirmation. You can see all of the demos on our website. Now, let's move to JioHome.
Jio powered India's journey from voice to data to video, pioneering gigabit broadband for every Indian. Today, we take the next leap. Jio Home's next generation offering delivers multi-gigabit capability, up to 5 Gbps download and 1 Gbps upload, dedicated to your home through our multi-gigabit ready Jio Air Fiber. But this is not about speeds. It is about what your family can do now. Look at your home today. Connected devices per home have grown multifold in 5 years. And this is only set to rise. We needed connectivity built to power that rise. One member streaming, another cloud gaming, a third on a video call, a child in an online immersive and interactive class, all at once, all flawless, nothing slows down. That's what 5 Gbps gives you. A breakthrough multi-gigabit wireless technology built in India. Speed also changes how things feel. A large file that took minutes now lands in seconds. The latest AAA game, 100 gigabits, streams whilst you pour a cup of chai, and you're playing before it's gone cold. This makes India ready for 8K multi-screen entertainment. This transforms work too. With 1 Gbps upload, your home becomes a true global workplace. Real-time co-creation with teams anywhere in the world. And this is just the beginning. We're entering the era of spatial computing with volumetric video, where AI and XR create interactive, immersive experiences. The opportunity is no longer just to connect homes to the internet. It is to turn every home into an intelligent home, a place to learn, play, work, and create at the speed of imagination. The fastest broadband in the world should reach you just as fast. At Jio, the journey to a connected home should feel effortless from the very first moment you show interest. Through our website, a missed call, or My Jio. So we're reimagining the entire Home Connect journey, from interest to go live. It rests on two simple promises. First, within 15 minutes of showing interest, you will get a call back in your own language. It answers every question, helps you pick the right plan, books your home connection slot, and stays with you throughout your Jio Home journey. Second, your Wi-Fi will go live within 24 hours, anywhere in India. This is connectivity, the way Indian homes deserve it. And finally, to our last announcement for the home. Today, we announce Jio Teleframe, the home for agents in your home. This is a family of Jio AI agents built for everyday life. AI agents for the day, for care, for guests, for entertainment, shopping, and of course, the connected home. Every agent has a job. Teleframe gives them one shared place to help, act, and stay visible to the family, always with permission and in every Indian language. These agents know you, your family, your routines, the room around you. They sense context and bring the right help forward without anyone opening apps, searching menus, or repeating what the home should already understand. The school morning starts before anyone opens an app. Teleframe knows the family is leaving soon. So the day agent brings up rain after 2 p.m. So you remember to carry your umbrellas and raincoats. And the doctor appointment at 5:30. Planning a festival lunch, the guest agent sees the plan taking shape. Hey Gio, did you get that? He checks who's arriving, suggests food dishes based on past family choices, builds the grocery list, and with one command, places the order for the right delivery window. It can update the host when delivery is en route. At dinner, Papa is at the table. Medicine is due, and the care agent reminds him before food. Match night begins with the India match. The agent opens Jio Hotstar, sets light, fan, volume, and keeps score updates visible. Different agents,
one home, a home that understands you and looks after the people in it. Dear shareholders, let me now talk about our media and entertainment business. In FY26, JioStar completed a remarkable first year of full operations. Today, JioStar, Jio Studios, and Network 18 together constitute India's most powerful media ecosystem. The business posted a full year revenue of rupees 34,917 crore, with an EBITDA of 5,842 crore and a net profit of 3,434 crores. JioStar remains India's leading television entertainment network, with a 34.7% viewership share, nearly equal to the next three players combined. Every day, 389 million viewers choose our content across genres and languages. On digital, Jio Hotstar has reached a scale that is amongst the largest in the world and the largest in India. The platform averaged 451 million monthly active users during the year. Our live streaming capabilities continue to set global benchmarks. During the recent T20 World Cup, where India was victorious, Jio Hotstar recorded a world record 72.5 million concurrent viewers in India. Today, 9 of the 10 highest global concurrency records belong to Jio Hotstar. IPL 2026 reached over 700 million viewers on our platform, demonstrating the unparalleled reach of our digital ecosystem. Jio Hotstar also became the first Indian paid OTT platform to cross 1 billion downloads and is now available on 99% of connected TVs in India. These milestones reflect a simple reality. Whether on television or digital, JioStar and Jio Hotstar are where India comes to be entertained. We launched multiple AI-driven platform initiatives in FY26. ChatGPT-powered conversational discovery with recognition of Indian accents and regional languages. Jio Hotstar's micro-content hub, Tadka, launched in April this year, has already amassed more than 100 million users in under 2 months. The first ever in-app commerce integration with Swiggy during IPL matches, which enabled food ordering without leaving the live video stream. We also pioneered interactivity features such as voting, live chat, and meme creation. More than 100 million unique users have used these features, generating over 11 billion interactions. Now, let me introduce JioStar Gen AI Media Studio, or simply JAMS. JAMS is an end-to-end AI-native content production pipeline for Bharat, spanning the full journey from ideation and storytelling to image, audio, video, and final production workflows. Through JAMS, we aim to nurture a new generation of creative technologists who can combine storytelling with AI to produce premium quality content for India and the world. Every product decision, every experience we build is designed to put power and choice and control firmly in the hands of the consumer. This philosophy has earned us the loyalty and trust of 500 million users on Jio Hotstar. Today, we are proud to present an exciting pipeline of innovations that will redefine how consumers experience entertainment and sports in the future, seamlessly woven into how they shop and engage across the Jio Hotstar ecosystem. Let me take you through a feature that gives you your own personalized story engine. AI Snapshot builds you your own recap, every key moment stitched into a narrative, right on your screen. Here's a demo to show you how it works. Meera's been meaning to rewatch Arya for months. Season 3 just dropped. She jumps straight in.
10 minutes into episode 1, Daulat appears on screen and is talking friendly with Arya. She freezes. Wait, wasn't he the one who killed her husband? She remembers the shock of that moment, but the why, the full shape of it, has gone fuzzy. She doesn't open a browser to search. She doesn't rewind to season 1. She just asks, why is Arya friends with Daulat? Didn't he kill her husband? It builds the story for her. The early scenes, Daulat laughing at the serene dinner table, the small moments of tension she didn't notice the first time. The debts, the deals, the slow unraveling of a loyalty that was never what it seemed. Not a summary of what happened, but the reason it happened. Assembled from across hours of storytelling in minutes. She hits play on the first scene. This time, when Daulat smiles at Arya, she knows exactly what that smile means. For the first time ever, a marketplace is created on an entertainment platform where you can shop while you watch without leaving your favorite content. Introducing content commerce on Jio Hotstar. Here's a closer look on how you can move from screen to cart seamlessly without leaving your screen. You are watching Dhurandhar on your phone when something on screen catches your eye. A Sherwani. And just like that, you want it. Instead of searching, you tap on the shop button right inside Jio Hotstar. The AI reads the frame in real time, identifying every outfit on screen. The exact items you're looking at appear tagged and priced. The shop panel brings it all together with retailer information, pricing, and alternatives in one marketplace. You find the one you like and tap Buy Now. It fetches your delivery address and payment details, no forms to fill. The order is confirmed, and you're right back to watching Dhurandhar. From inspiration to intent to purchase, all in a few minutes without leaving your screen. At Jio Hotstar, we understand that you have diverse interests and want to watch multiple feeds all at once, but don't want to choose between entertainment, sports, or news. We have ensured you watch it all on one screen, side by side. Here's a glimpse of multi-view in action. Vikram has a problem most people would envy. India are in a tense run chase. The tension is building ball by ball. Breaking news is also rolling in. Election results, state by state, constituency by constituency, too close to ignore. Moreover, big boss eliminations are happening. Any other day, he'd have to choose, but not today. He picks up his remote and builds his screen. The match, he needs to watch every ball of this chase. Adds the news channel to track state results live as they're declared. Next up, big boss eliminations. And lastly, he adds another news channel in Bengali. A different desk, but same urgency. He switches from the match to see who is trailing and who is winning. He notices an interview happening on the news channel in Bengali. 4 things, one screen. Silent, present, there when he needs to be. Dear shareholders, let me now speak about Jio Studios, India's #1 content studio by revenue, catalog size, and box office share. The Dhurandhar franchise crossed 3,000 crore in worldwide box office gross, making it the first Indian film duology in which each film crossed 1,000 crores. With this, Jio Studios completed 3 consecutive years as the highest grossing Hindi film studio and now has over 500 awards across its content slate. Dear friends, Network 18 reached 250 million people every month through television and has over 450 million subscribers and followers across its digital platforms. It has also established a stronghold on social platforms with more than 65 billion video views this year. Our flagship brands, CNBC TV 18, CNN News 18, News 18 India, continue to lead their categories. Money Control
is India's leading financial intelligence destination. Money Control Pro and Money Control Super Pro have strengthened Money Control's subscriptions business with a fast-growing, feature-rich offering for investors that's seeking actionable insights. First Post remains the premier destination for audiences seeking an Indian view of the world. With the creator economy growing exponentially, the company launched Creator 18. This offering strengthened its ability to deliver social media solutions for clients and develop new formats that resonate with the younger audience. With that, let me invite our chairman back onto stage. Splendid, Akash. I can see the passion, dedication, and hard work you and your team are putting into this mission. When work is done with such devotion, hard work becomes heart work. I am confident that this hard work will make Jio's second decade even more scintillating, more purposeful, and more transformational. As Jio enters its next decade, our aim is to build one of the world's leading digital infrastructure and AI platforms while creating enduring value for all shareholders. Dear shareowners, when Dhirubhai Ambani took Reliance public in 1977, he made an unspoken promise to all Indians. The promise that Reliance will always build for the people, not merely for profit. 20 years ago, we renewed that vow in the most direct and personal way possible. We walked into the lives of every Indian family and said, you deserve products of better quality, better choice, better value, with consistent innovation across offline and online channels every single day. And that was the founding philosophy of our retail business. In November 2006, we opened our first Reliance Fresh store in Hyderabad. What followed is one of the most extraordinary growth stories in the history of global retail. Within 5 years, we had crossed 1,000 stores and $1 billion in annual sales. Within 8 years, we became India's largest retailer. And in the fourth quarter of the financial year 26, we crossed 20,000 stores, a scale no retailer in Asia has achieved in such a short time. Looking back, I see 3 distinct chapters. First, the launch era, building from nothing, store by store, town by town, earning the trust of Indian consumers, one transaction at a time. Second, the expansion era, integrating the physical might of our stores with the digital heartbeat of India. Reliance Retail became an omni-channel retail ecosystem. Through JioMart and Ajio, we brought the store to the smartphone and the convenience of modern retail to every pin code in this country. And now, the deep tech intelligence era. Our unmatched deep tech capabilities, coupled with our unparalleled digital reach, have been one of the principal accelerators of our retail business. We leverage AI and deep tech to operate with precision and efficiency. Moreover, our deep understanding of Indian consumers and wealth of data enable us to offer the very best product and services. Friends, Indian retail is evolving faster than ever. From the corner store to the smartphone, from a single basket to a daily habit, Reliance Retail has been at the forefront of this evolution. It is the trust of Indian consumers which has placed us among the global top 50 retailers, and we remain the only Indian retailer to achieve that distinction. Reliance Retail is now poised for another great leap forward. Between Reliance Retail and RCPL, we will add 2 powerful growth-boosting platforms. First, an advanced manufacturing platform. We are building a manufacturing platform extending from beverages and daily essentials to one of the most unorganized categories, fresh fruits and vegetables.
This category is in urgent need of waste reduction, hygiene promotion, and higher safety standards. We will modernize this by bringing our sourcing, cold chain, and distribution strength to fresh produce. This will give farmers fairer returns, shopkeepers dependable supply, and every family fresher food at fairer prices. We are also building a future-ready garment manufacturing system. This will deliver better quality garments to our customers at the most competitive cost. We have created supplier partnerships in 21 pan-India clusters where these garments will be manufactured. We will also do the same for affordable electronics, from smart eyewear to television, smartphones, and connected wearables, with a continued focus on superior customer service. Second, an exports platform. Our exports platform is a logical extension of our manufacturing platform in retail. The rapid growth in our consumer brands business in India has given us the confidence to build a strong and scalable global FMCG business. Our export journey reflects the growing strength of our brands, our competitive product portfolio, and our ability to serve diverse consumer needs across global markets. Let me now invite Isha Ambani, Executive Director, Reliance Retail, to address us. Thank you, respected Chairman, esteemed shareholders. Financial year 26 was a year of strong execution and measurable acceleration. Gross revenue reached 3,70,026 crores, growing 11.8% year-on-year. EBITDA grew 7.9% to 27,033 crores, 3.4 times that of our nearest competitor. Profit after tax rose 12% to 13,838 crores. Our registered customer base reached 387 million, up 11% year-on-year. We processed 1.93 billion transactions, up 39% year-on-year. That single number captures something significant. Quick commerce coming of age, adding a promising new layer to the growth of large basket shopping. We now operate 20,160 stores across 78 million square feet. In grocery, our Smart Bazaar network crossed 1,000 stores, one of the fastest large-scale retail rollouts in the world. A large part of this network now serves Tier 2 and below markets. In many of these towns, Smart Bazaar is the first organized modern retailer, transforming access for millions and creating livelihoods that did not previously exist. This year, we launched the All Goods Exchange program across Smart Bazaar stores, collecting over 4,400 tons of recyclable material in the first 45 days. The scale of our grocery operation reflects the strength of our farmer and supply chain partnerships. We procured approximately 5.7 lakh metric tons of fresh fruits and vegetables this year, partnering with over 40,000 farmers across 110 collection centers, delivering low prices to the consumers and better returns to the farmers. We sold 12 lakh metric tons of staples. In home and personal care, our portfolio is growing 3 times faster than the industry. Clean shampoos are growing at 8 times the market rate, laundry shots at 9 times, and roll-ons and sunscreens at 4 times. Quick commerce is fast becoming a daily habit for millions of Indian households, and we are expanding in this space. JioMart has become one of India's largest quick commerce networks, with 3,100 plus stores serving 1,200 plus cities across 5,100 plus PIN codes. Average daily orders grew 3.6 times year-on-year. From smartphones to last-minute outfit changes, thousands of products across these diverse categories arrive within hours, even in small towns. Repeat orders on quick commerce grew more than 6-fold. In fashion and lifestyle, we sold over 8 lakh garments every day. Ajio's average bill value rose 23%, average selling price grew 17%, and option count expanded to 3 million, up 22% year-on-year.
Ajio has grown 7 times in 5 years. Ajio Rush, our 4-hour delivery promise, now covers 600 plus towns. Shein has crossed 11 million app installs, adding 1,000 new styles daily. Dear friends, global fashion at Indian prices is an idea whose moment has arrived. Our premium brand segment added exclusive long-term partnerships with Stella McCartney, Kurt Geiger, Max & Co. and Fabletics. Playing a perfect foil, Tira is anchored in deep pride in India's rich heritage, placing traditional Indian products on mainstream consumer shelves. Tira recently introduced Pura Veda, its own Ayurveda-inspired beauty range, giving Indian rituals the global stage they deserve. Reliance Retail also welcomed Pahadi Local into its family. Known for its pristine mountain-sourced ingredients and its iconic Gutti Ka Tel, this homegrown brand represents the best of authentic Indian wellness. We will scale our own brands to consumers across India and beyond, ensuring Indian beauty products stand proudly alongside the world's leading global giants. In consumer electronics, we grew significantly faster than the market. We sold over 2,500 phones every hour, along with more than 4,000 televisions, 8,000 large appliances, and 1,600 laptops every single day. Our rescue after-sales network spans 1,621 locations, handling 6.5 million service volumes this year, reaching nearly 19,000 PIN codes. JioMart Digital is now India's largest mobile distributor, with 1.2 lakh active retail partners reaching over 85% of the addressable retail universe. In jewels, average bill value grew 53% year-on-year, with a deliberate and continuing focus on design-led diamond jewelry. Today, Swadesh directly collaborates with over 900 artisans across 270-plus craft forms, from Longpoi pottery and Naga weaving in the northeast to Dhokra metalwork in Chhattisgarh, Banjara embroidery in Telangana, and Toda embroidery in Tamil Nadu. Over 3,000 individuals from tribal communities find employment through this program. These are not transactions. These are acts of cultural preservation at commercial scale. Dear shareholders, the intelligence era in Reliance Retail is not a vision. It is already live. But the intelligence we are building is not merely computational. Indian consumers are shaped by culture, by community, by aspiration, by festivals, by season, and by sentiment. What will separate Reliance Retail from every other retailer in the world is not just the scale of our data, but our ability to combine technology with a deep understanding of Indian consumers. In the decade ahead, Reliance Retail will not merely sell products. We will catalyze a sustainable, inclusive, and technologically advanced way of life for every Indian, contributing our fullest to the vision of a Viksit Bharat. Dear shareholders, 3 years ago, we took a leap of faith that India could produce FMCG brands of global quality at Indian prices and scale them faster than anyone thought possible. Reliance Consumer Products Limited has done just that, building a national FMCG powerhouse from the ground up and doubling its revenue in a single year. In financial year 26, RCPL achieved gross revenue of 22,000 crores, growing twice year-on-year. What took our peers decades, we achieved in just 4 years. It made us one of the fastest growing FMCG platforms in India's history and one of the fastest growing consumer product companies anywhere in the world. Today, RCPL products are present in more than 40 countries through exports and franchise sales, making RCPL a truly global Indian consumer brand. This year, however, was not without its challenges. Geopolitical headwinds drove up raw material and packaging costs and disrupted global supply chains. We absorbed these shocks entirely within the business. Staying true to our consumer-first approach, we ensured our products remained accessible and affordable for every Indian household. RCPL is now a direct subsidiary of Reliance Industries, having completed its demerger from RRVL in December 2025.
With singular focus on its own markets, its own consumers, and its own ambitions, the results have been exactly what we envisioned. Campa achieved 4,700 plus crores in gross sales in financial year 26. Having challenged decades-long market leadership, it is now India's fourth largest carbonated soft drinks brand with a double-digit market share in key markets. Campa is not merely a brand, it is India Ka Thanda. Independence, our daily essentials brand, delivered 2,600 crores in revenue and was recognized as one of India's most trusted brands of financial year 26. In packaged drinking water, RCPL is now India's third largest branded water player, powered by Campa Shaw, launched nationwide in October 2025. In beverages, we grew 3.2 times year-on-year. Daily essentials grew 1.6 times. Our home and personal care portfolio grew 1.3 times. The foods category delivered positive momentum across biscuits, confectionery, snacks, and processed foods, with SIL repositioned for a new generation of consumers. Friends, this year we made a series of focused acquisitions extending the RCPL platform in precisely the right directions. In daily essentials and foods, we acquired majority stakes in Udhayam Agro Foods and in Southern Health Foods, known by its key brand Manna, a cherished regional name to which we will bring national fame. In beverages, we acquired Goodness Group Global, the Australian business behind Nexpa, Bison and Pace, co-created with cricketer Pat Cummins. In personal care, we acquired global rights, excluding select territories, to heritage brands like Brile Cream, Toni & Guy, Badidas and Mate, significantly deepening our grooming and bathing portfolio. We're also building brands with cultural resonance. We rode the excitement of the T20 Men's Cricket World Cup, activating Campa Shaw and Sun Crush to powerful consumer response. We dominated the IPL with Campa Energy, building national momentum through high GRPs across India. We deepened our regional connect through Power Up in Andhra Pradesh and Telangana and Purple Energy in Tamil Nadu. Dear shareholders, the Indian consumer is evolving. We're not just keeping pace, we're anticipating what comes next. Our competitive advantage rests on 4 pillars. First, deep tech innovation. Our state-of-art R&D center, staffed by over 125 scientists, has developed more than 100 products and filed 9 new patents and 11 design applications in the last year alone. Second, advanced manufacturing scale. 10,000 crores of rupees invested to date, with beverage production now spanning 12 states through high-speed bottling lines in multiple greenfield plants. We're building food parks across India, modern, integrated facilities with multi-category production lines spanning biscuits, chocolates, staples, and packaged foods designed to drive scale efficiencies through cross-category integration. Over the next 3 years, a further 30,000 crores of rupees of investments will build one of Asia's largest networks of such integrated food parks, AI-driven, robotics-enabled, and engineered for lasting cost leadership. Third, distribution depth. 3 million plus outlets reached through 5,000 plus distributors in 3 years, faster than any player in Indian FMCG history. We're expanding into the Northeast, West Bengal, Bihar, and other geographies. Fourth, value proposition. India's large rural consumer base and millions of middle-class households share one aspiration: global quality at Indian prices. That is the founding logic of everything we make, price, and distribute. Friends, we're building a business where every decision is powered by data and every process is driven by intelligence. Embedding AI across all our functions, from understanding what consumers want, to planning what we produce, to how we move our products across the country. This foundation will help us move faster, operate smarter, and remain closer to what our consumers truly need. Our vision is simple: to be at the heart of every Indian home. Not in one category, but across the full arc of everyday Indian life. From daily essentials and staples to packaged foods and snacks to the moments of indulgence that make life worth savoring. We're building not merely a portfolio of brands, but a consumer ecosystem that grows with every stage of Indian life. RCPL's near-term ambition is to reach
1 lakh crores in revenue by financial year 2030. Our long-term ambition is to become one of India's largest FMCG companies with a global platform to match. We have just begun scripting the best of RCPL. Soon, it will be a value-creating engine for Reliance Industries, comparable in scale and profitability to our retail business. This is my assurance to our esteemed shareholders. Thank you, and let me now welcome back the Chairman. That was truly impressive, Isha. Dear shareholders, let us applaud Isha and the entire retail and consumer product teams for what they have built and for the clarity and courage with which they intend to build the next phase of Reliance Retail. Together, Reliance Retail and RCPL create a uniquely integrated platform spanning manufacturing, distribution, brands, commerce, and consumer relations. Our ambition for the next decade is not simply to be the world's largest retailer. It is to be the world's most intelligent, most humane, and the most inclusive consumer ecosystem, one that makes life of quality and dignity an everyday reality for every Indian. Esteemed shareholders, I now turn to another business vertical of Reliance, which is both the oldest and the newest. Energy is the very essence of civilization that has driven the progress of humanity. Since the birth of Jamnagar, Reliance has carried an abiding commitment to India's energy self-reliance. I see India today standing at the threshold of an energy supercycle, with energy demand rising rapidly over the next decades across all segments. Yet, India remains dependent on external energy sources for over 70% of our needs. This is not only costly, but it also makes India vulnerable to geopolitical instability. Clearly, it is unsustainable in the long run. We consider it our duty to ensure India's future is never held hostage by energy insecurity. Reliance is working on the most comprehensive, integrated, and future-focused plan by any Indian corporate to boost India's energy sources in every way possible, from solar, battery, wind power, hydrogen, to underground coal gasification and compressed biogas and bioenergy. The singular aim is that India must produce almost all the energy needs it has in abundance in the most affordable and the most eco-friendly manner. This, I believe, will be the most apt tribute to the Prime Minister's Atmanirbhar Bharat initiative. The abundant green energy will enable India become a leader in green AI, green chemicals and materials, green fuels, green jobs, and green exports. Let me now invite Anant Ambani, Executive Director of Reliance Industries. Thank you, respected Chairman. My esteemed shareholders, Reliance's exploration and production business is a strategic cornerstone of India's energy security. Our KG-D6 and CBM fields together constitute one of India's most productive natural gas platforms. When the West Asian conflict disrupted LNG supplies, Reliance swiftly redirected its domestic gas to priority sectors such as city gas distribution, fertilizers, and power generation. When the nation needed it most, Reliance delivered. This business reported revenue of 23,861 crore and an EBITDA of 19,050 crore for the year 26. Friends, our KG Basin fields performed in line with expectations. Gas production was nearly 26 MMSCMD, which is about 30% of India's natural gas production. Further, oil production was about 18,000 barrels of oil per day. We are executing a targeted well intervention program to sustain plateau production through the year 27 and beyond. On CBM, I am pleased to report
impressive momentum due to the successful implementation of multilateral wells, the first of its kind in India. Our second campaign is on schedule, with 23 of 40 multilateral wells completed, and production momentum is building. Given E&P's vital role in India's energy independence, Reliance will continue to actively pursue new opportunities in this sector. We are building not just for today's energy needs, but for India's energy future. Dear shareholders, let me now speak about our oil to chemicals business. Every business aspires to one quality above all else: the ability to stay strong when the external environment turns volatile. In the year 26, our oil to chemicals business demonstrated that quality not in theory but in practice, under perhaps the most extreme conditions. Revenue for the year grew 5.7% to 6,62,401 crore. EBITDA grew 10.1% to 60,546 crore. Friends, let me take you back to March 2026, when the Strait of Hormuz was disrupted. Crude and product markets witnessed extraordinary volatility during the period. Yet, our diversified sourcing and agile logistics sustained operations, helping us maintain near full refinery throughput in the fourth quarter. However, the conflict impacted margins as physical barrels commanded a premium, freight rates jumped, and insurance costs surged. We increased LPG supply fourfold to help the nation tide over the import disruption. This is the structural advantage of building the world's most integrated, most flexible, most resilient refining and chemicals complex. The decades of investment in feedstock diversity, gasifier infrastructure, and operational excellence delivered when it mattered the most. Dear shareholders, as committed last year, our major investments are progressing well. Let me walk you through them. Advanced execution is underway on the 3 million ton PTA facility at Dahej. This project will cement our position as one of the world's most cost-competitive producers. Our carbon fiber facility at Hazira is poised to become one of the world's largest and most advanced facilities of its kind. This is a monumental achievement and provides a platform from diverse industries, ranging from wind energy to hydrogen and from humanoids to defense. Our PVC and CPVC expansion, including a 1.2 million ton PVC plant at Nagothane, will significantly cut imports of materials that millions of Indians' homes and industries depend on every day. These capacities will serve India's growing demand across infrastructure and consumer goods, boost value-added exports, and capture the next leg of growth. Friends, we continue to adopt digital technologies in innovative ways to enhance operational efficiency. Here are 3 specific examples of how we are digitizing operations. First, our proprietary AI-driven feedstock optimization tool now helps select the most efficient crude blends. Second, our digital logistics platform developed in-house streamlined chartering and supply chain operations. And third, the new age smart contract execution tools improve speed and accuracy in customer transactions. Building on these digital foundations, we are progressing towards operating Jamnagar as the world's first end-to-end autonomous refinery, an industrial milestone that will define the next era of global refining. Dear friends, our consumer energy business under GOBP grew strongly this year, maintaining adequate fuel availability in domestic markets despite costs soaring above market prices in the last few months. GOBP petrol and diesel volumes grew 29% year-on-year, significantly outpacing industry growth and gaining higher market share. Our retail network grew to nearly 2,200 outlets, with 400 under construction. We expanded EV charging to 80 cities and 45 highways,
and grew our CBG network, making us the largest player in the country. Our CBG and CNG network covers 177 sites, with volumes growing 68% year-on-year. JioBP remains India's most efficient and effective fuel retailing network. Dear shareholders, our O2C business is entering its next generational strategic evolution. Every barrel of crude we process will increasingly yield chemicals and high-value materials, not just fuels. More efficient, more export-driven, more valuable. This business financed our past. It is financing our future, and it's the best chapter still ahead. My dear shareholders, there are businesses that create value, and then there are missions that shape civilizations. Our new energy business is a unique combination of both. It is Reliance's most ambitious generational undertaking, designed to solve India's energy trilemma of security, affordability, and sustainability simultaneously at a scale that has no parallel. In the year 26, this mission moved from construction to commissioning. The Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex at Jamnagar, spread over 5,000 acres, is now one of the world's most integrated clean energy manufacturing ecosystem. Our founding chairman, Shri Dhirubhai Ambani, always dreamt of making India self-sufficient in energy. This business is a manifestation of that dream. Dear shareholders, I am proud to report that our solar PV cell and module manufacturing lines have been commissioned and are now operational. Nearly 1 gigawatt of HJT modules have been produced, with around 2% higher energy yield, 15% better temperature performance, and 25% lower degradation than conventional modules. We have achieved ALMM listing for HJT technology, the first in India for this advanced cell type. This is a proud affirmation of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's clarion call for Make in India. We are building towards 20 gigawatt per annum of fully integrated capacity, from polysilicon to ingots, wafers, cells, modules, and glass. Every step in this chain is a step towards Atmanirbhar Bharat. Friends, the first phase of our 40 gigawatt-hour annual BESS and cell gigafactory is on track to be commissioned this year. All the equipment has already been delivered at the site, and we have now committed to scale this up to 120 gigawatt-hour of annual capacity. When commissioned, this will make Reliance one of the world's largest manufacturers of lithium iron phosphate batteries. Let me put that in perspective. In a world where supply chains are being contested and access to technology is being weaponized, building world-scale battery manufacturing capacity in India is not merely a business decision. It is a strategic imperative for national resilience. This is the holy grail of affordable, sustainable, and self-sufficient round-the-clock RTC power, and Reliance is making it real. Dear shareholders, let me now turn to where this ecosystem comes together. In the arid Kutch region, where we are developing a renewable energy hub across 550,000 acres, this hub is being built to deliver round-the-clock power at gigawatt scale, combining solar and battery storage systems in a single unique integrated architecture. This platform will become one of the lowest cost resources of round-the-clock green power anywhere in the world. Once fully operationalized, the integrated hub will generate over 40 billion units of green electricity every year, which is approximately 3% of India's annual electricity requirement. The dedicated Kutch to Jamnagar transmission corridor is under construction, with EPC contracts awarded. Our peak installation rate target is 55 megawatt peak of solar modules and 150 megawatt hour of battery containers per day. I want you to pause and absorb that number.
55 megawatt peak of solar installations per day, 150 megawatt hour of storage per day. This is not just any project. We are gearing up for a world-scale deployment of clean energy infrastructure at a pace the world has never seen before. Dear shareholders, green electricity is the foundation, but green molecules are the transformation. Our green chemicals program is advancing on plan. We are on track to commission our alkaline electrolyzer manufacturing gigafactory. We will unlock 4 powerful monetization streams through green molecules. 1. Green urea, strengthening India's food security. 2. Urea ammonium nitrate, UAN, for our fertilizer needs. 3. Green ammonia for co-firing in power generation, displacing fossil fuel emissions in India and export markets. And 4. Biomethanol, a clean transport fuel and chemical feedstock with sustainable aviation fuel applications and with a growing global demand. I am proud to announce that Reliance has signed a landmark $3 billion long-term supply agreement with Samsung C&T for green ammonia, which is among the largest green ammonia offtake contracts in the world. This validates the commercial competitiveness of our green hydrogen platform. We are in advanced discussions for more such exports to Japan, Korea, and Europe with long-term offtake commitments. Our target of 3 million metric tons of green hydrogen equivalent green chemicals capacity in the next 10 years remain firmly in our sight. Friends, step back for a moment. Consider what we are truly building here. The world's first fully sovereign clean energy ecosystem. Sunlight converted directly into electricity and green molecules. No imported fuel, no foreign technology, no exposure to the disruptions that have shaken the world this past year. Few enterprises globally are attempting this level of integration and scale. This is not merely a business. This is Reliance's most enduring strategic asset, both for our nation and for the world. Dear shareholders, building this ecosystem from scratch in India with indigenized technology has been harder and more complex than any roadmap could fully anticipate. We own that, but the foundation is now built. Commercial revenues from solar modules start rolling in this year. The battery factory commissions this year, and the Samsung C&T agreement is not a promise. It is a signed contract. From the year 27 onward, new energy will begin contributing meaningfully to Reliance's financial performance. We ask for your continued trust, and we intend to earn it quarter by quarter. Dear shareholders, Reliance now contributes over 40% of India's entire compressed biogas production. We are on track for 55 plants producing approximately 1,100 tons per day by the end of year 27. Over the next 5 years, we target to establish integrated CBG hubs to achieve 1 million tons of annual CBG capacity. Friends, we are also advancing our work in underground coal gasification, UCG, which will convert India's uneconomic and low-quality coal reserves into clean syngas, thereby substituting imported LNG and directly adding to our low-carbon energy pool. Dear shareholders, before I close, I want to leave you with one number, a number that to me defines what this new energy mission is truly about. 200,000, that is the number of green jobs we expect to create through the Giga Complex and the Kutch Solar Farm combined. 200,000 Indians, engineers, technicians, operators, construction workers, farmers, and entrepreneurs whose livelihoods will be built on clean energy. The clean energy transition will be an engine of inclusive prosperity. It will create jobs, reduce import dependence, boost exports, lower energy costs for every Indian home and every Indian factory, and fulfill our obligation to save Bhumata, Mother Earth, from the climate crisis. The world built its old energy on Middle Eastern oil.
The world will now build its new energy on Indian sunshine. Friends, for me, the new energy business is a third-generation business at Reliance, which we are building with the purpose and passion of first generation. It is our generation's contribution to India's energy story and our promise to every shareholder, every employee, every farmer, and every citizen who depends on our motherland's energy future. My beloved grandfather and father proved that Indians can build the impossible. We are proving it again, and this time the whole world is watching. Let me end by proclaiming the motto of our new energy business. Harit Urja, Harit Vikas, Harit Bharat, Sarva Shresht Bharat. Thank you. Jai Shri Krishna, Jai Hind. Well done, Anant. Dear shareholders, the O2C business remains the prime contributor to Reliance's financial performance. Reliance has demonstrated the resilience of this business time and again through every kind of challenge. The oil to chemicals business is on the path to achieve carbon neutral operations at least 2 decades before India's 2070 target. In the long run, we will convert all the oil we refine into chemicals and new materials. This transformation will fundamentally improve the quality, resilience, and the value of our earnings. I am confident that our new oil to chemicals and material business will become even more valuable than our current oil to chemical business. Our ambition is simple: to make Reliance the world's leading integrated energy and materials company for the age of sustainability and intelligence. Friends, Reliance has emerged a natural partner for global chemicals and materials major in this volatile world. We are open to flexible partnerships and co-building integrated complexes in India and abroad, anchored in our integrated feedstock, unmatched manufacturing scale and execution capability, the lowest cost base, and a strong balance sheet. India remains one of the most favorable geographies globally for expansion, and Reliance offers our partners a single secure base to serve both India's large domestic market and the global demand. The upcoming fully integrated green ecosystem will not only transform our old energy business, but also open up significant possibilities for our growth and India's future growth. Reliance, with its 5 integrated engines of growth, UCG, bioenergy, new energy, oil to chemicals, and the materials business, is now ready to deliver exponentially more value. With the new energy and materials platform and an AI-native way of working, Reliance is transforming our oldest business into a unique first-generation growth platform, one that cannot be replicated on technology and scale. Let me now invite Neeta Ambani, chairperson of the Reliance Foundation, to share her exciting update on the Reliance Foundation. Thank you, Mukesh. And well done, Isha, Akash, and Anant. Dear members of the Reliance family, our esteemed shareholders, Namaskar. Congratulations on another path-breaking year of achievements and growth. None of this would be possible without your trust, partnership, and support. As I stand before you today, my heart is full of gratitude, of humility, and of a hope that grows stronger with every passing year. This year, Reliance Foundation enters its 16th year of dedicated service to India, of putting our philosophy of we care into action every single day. What began as a corporate commitment has grown into one of our nation's largest and most impactful institutions,
of social transformation. Today, I'm honored to share that over the last 16 years, Reliance Foundation has touched the lives of over 97 million Indians across every single state of India. We work in nearly 100,000 villages, that is, almost 1 in every 6 villages of India, with a simple vision to help every village become more self-reliant, more climate resilient, more rejuvenated, and full of opportunities and hope. In these villages, we run health camps, empower women, restore ecosystems, uplift Anganwadis, enhance learning spaces, train farmers to use digital and AI tools, offer relief after disaster, and rebuild lives and communities. And in every village we enter, in every child we educate, in every woman we empower, I see the same thing. A nation that is not just growing, but awakening and rising with renewed confidence, dynamism, and determination. A nation whose time has truly come. Our dear shareholders, over the past year, we have continued to deepen our work across rural transformation, healthcare, education, sports, women's empowerment, disaster response, art and culture, and environmental sustainability. Today, I would especially like to speak about 3 transformative initiatives that reflect our vision for a more prosperous, shared future. First, a university that will raise India's global standing in higher education. Second, a garden for all of us, 20 million Mumbaikars, to enjoy nature, breathe fresh air, build communities, and make memories. And third, a medical city that will bring world-class healthcare to the heart of Mumbai. Let me begin with education. As India marches towards joining the ranks of developed nations, we need more Indian universities that can be ranked amongst the best in the world. Our upcoming university will fulfill this ambition. Dear shareholders, I'm proud to share that we have received approval from the Government of Maharashtra to establish a state-private university. Our interim campus at Ulve is already a vibrant center for learning with modern academic, residential, and sports facilities on par with global standards. But what lies ahead is even more transformative. Our upcoming permanent campus at Dronagiri, spread across 410 acres, will be truly world-class in size, design, and most importantly, excellence in academics and research. It will bring together an academic district, a research park, a sports district, a medicity, a residential district, a vibrant arts district with amphitheaters, performance halls, and art houses, an innovation and incubation park where cutting-edge research supports the creation of unicorns. This state-of-the-art university will host 7 world-class schools with a focus on AI and emerging technologies. The School of Engineering and Computing, the School of Management and Entrepreneurship, the School of Law, Governance and Policy, the School of Humanities and Social Sciences, the School of Medical Science and Public Health, the School of Architecture and Urban Planning, and the School of Education. The university will offer undergraduate, postgraduate, doctoral, and postdoctoral programs that support our shared vision for an India that excels in every field.
Combining the highest standards in academics and research, it will bring together a distinguished community of teachers, scientists, researchers, innovators, and thought leaders from around the world. In line with the vision for Viksit Bharat, our university will help Mumbai transform into a knowledge city and Bharat into a Gyan Bhumi, a knowledge power. At our university, we will welcome international faculty, students, and scholars from around the world, creating a global academic community in an ever-evolving world where change is the only constant. Educational institutions also need to change with the times and create future leaders who are agile, adaptable, and resilient. Our ethos is to nurture a culture of excellence, integrity, and lifelong learning, an institution that will inspire thinkers who question, builders who create, scientists who innovate, and leaders who serve, students who carry the confidence of India's heritage and the ambition of its future, who are rooted in our values, but at the same time are the citizens of the world. Respected shareholders, a truly compassionate society must care not only for its people, but also for the voiceless. This year marks the first anniversary of Vantara, and this year we also laid the foundation stone of Vantara University, a global university dedicated to training the next generation of wildlife conservationists and veterinary scientists. Respected shareholders, alongside education, sport remains a key focus area for us at Reliance Foundation. Through our Education and Sports for All program, we have reached more than 29 million young children and youths all over the country. When talent meets the right opportunity, extraordinary things happen. This year, our Reliance Foundation athletes won 386 national and international medals. We are now focused on Olympic sports, where India has the highest potential to shine on the world stage. Archery, athletics, boxing, shooting, wrestling, and badminton. In partnership with the International Olympic Committee, we are also using sport to do what it does best. Teach values of friendship, excellence, respect, discipline, resilience, and teamwork. We start working with them as young as 3 years old. Friends, as an IOC member and a proud Indian, I carry a dream very close to my heart, a dream shared by over 1.4 billion Indians, to bring the Olympic Games to India, a dream in which the sporting world comes together on Indian soil, our hearts filled with pride and our arenas with triumph. Not just triumph of talent, but triumph of the human spirit. Truly an Olympics that the world will never forget. Friends, a stronger India is built on the foundation of a healthier India. We are moving forward with our vision of a transformative medical city and medical college in Mumbai. Reliance's plan to modernize Seven Hills Hospital marks a significant milestone in this journey of strengthening India's healthcare infrastructure and expanding affordable world-class medical care. With a planned capacity of 1,500 beds, Seven Hills is envisioned to be one of Mumbai's largest hospitals, leading in clinical research, cancer care, emergency and trauma services, organ transplantation,
neurodegenerative disorders such as Alzheimer's and Parkinson's. The hospital will leverage advanced medical technologies, artificial intelligence, data-driven clinical systems, digital health platforms, and compassionate patient care. For us, this is much more than a hospital. It is the beginning of a truly integrated medical hub in the heart of Mumbai. What makes this journey especially meaningful is our partnership with BMC. The hospital will also have more than 450 beds dedicated to serving the economically weaker sections of society. Dear shareholders, last year I shared with you a dream taking shape along Mumbai's coastline, the Coastal Road Gardens. We now have a world-class team of landscape architects, ecologists, planners, and engineers who are working on the master plan design, one that brings global expertise while remaining uniquely and authentically Mumbai in spirit. Initial work has commenced and 15,000 trees are already on site. In a city that never stops, the gardens will serve as a pocket of stillness, peace, and serenity, as an invitation to heal and soak in fresh air. Spread across 130 acres, these gardens will be a home to more than 60,000 trees, shaping a vast new green lung for Mumbai. It will be a hub of flora and fauna, with shaded walking and cycling paths, open maidans, public gyms, children's play areas, and vibrant spaces for arts and culture. It will also feature unique attractions for families, like a tree museum and state-of-the-art facilities for sports, including cricket, football, tennis, kabaddi, basketball, paddle, pickleball, and other sports. The Coastal Road Gardens will be a tribute to the spirit of Mumbai, a place for every Mumbaiker to reconnect with nature, and an investment in the long-term health of our city. Every great city has an iconic garden by which it is known. What Central Park is to New York, Hyde Park to London, and the Botanic Gardens to Singapore. We hope the Coastal Road Gardens will be to Mumbai. Dear shareholders, while these landmark initiatives represent our vision for the future, our work on the ground continues to transform lives in meaningful ways. Behind every number in our annual report is a life changed, a family uplifted, a future transformed, a woman who earns and now signs her own checks, a young man who got his first job and handed his salary to his aged parents, a child scouted from a small village who went on to wear the Indian jersey, making not just his parents, but his entire village community and country proud. Whether it is empowering 1 million women entrepreneurs, helping nearly 2 lakh young Indians gain employment, reaching over 23 million people for rural transformation, or supporting our arts, artists, and artisans as we carry Indian culture on the global stage with love, respect, and pride. My dear Reliance family, we are living through an incredible moment in our nation's journey, a moment when India's leadership is ever stronger, our aspirations bigger, our confidence higher, and the possibilities before us greater than ever before. Guided by the vision
of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, we remain committed to playing our part in realizing these possibilities. Reliance Foundation carries forward our founding conviction that what is good for India is good for Reliance. 16 years ago, we made a commitment to our nation. 97 million lives later, that commitment has only grown deeper, stronger, and more urgent. We carry that conviction not as a policy or a program, but as a purpose. Friends, like I said at the beginning, India's time has truly come. We are a civilization reclaiming our destiny. India's rise today is not just an economic or cultural story. It is a human story. A nation of over 1.4 billion dreams finding a voice, one of the youngest, most energetic, and most aspirational populations of the world, stepping into their full potential. At Reliance Foundation, we consider it not just our corporate social responsibility, but our moral and patriotic responsibility to stand in service of our nation. There's so much to be done, and it can only be done by expanding the circle of cooperation and partnerships with governments, philanthropic organizations, and other stakeholders. Rashtra Seva, motivated by Rashtra Bhakti, should become a Rashtriya Abhiyan. That is a calling of every single Indian. We remain grateful for your trust, support, partnership, and shared belief in this path of Desh Seva and Desh Bhakti. Thank you. Dhanyavad. Jai Hind. Thank you, Neeta. Reliance Foundation is truly a jewel in the crown of Reliance Industries. We are proud of your team's achievements under your passionate guidance. We wish the very best for Reliance Foundation's future plans. Dear shareholders, let me now share our value creation roadmap with you. Today, we stand at the threshold of our next phase of hypergrowth. The foundations have been laid. The platforms have been built. The capabilities have been assembled. And the opportunities before us have never been greater. Throughout our journey, one principle has guided us. What is good for India is good for Reliance. This belief has always defined our priorities. It has also shaped how I view value creation from a long-term perspective. We have seen many temporary dips in shareholder value in the past, but when we develop our inherent strengths persistently and when we deliver growth consistently, value accretion happens inevitably. Our track record is impeccable. Reliance now has diverse streams of cash flow which reduce earnings volatility and deliver earnings growth in the high teens over investment cycles. As a result, our performance has more than matched our promises always. We doubled our EBITDA in the last 5 years. And as I look to the future, I am absolutely confident in our ability to double, indeed more than double, our consolidated EBITDA over the next 5 years. In other words, Reliance will rank among India's foremost wealth creators throughout Amrit Kal. My dear shareowners, the most important value creation milestone this year, of course, is Jio's imminent IPO. I assure you that this will unlock great value for Reliance shareholders and offer an attractive investment opportunity to others. Dear friends, people often ask me, how has Reliance managed to grow so big in such a short time? What is the secret? The answer is hidden in just 2 words: founder's mindset.
Every new generation has to believe it is the founder of Reliance and is the first generation. I followed this principle when I took to the helm of Reliance 25 years ago. Leaders of our generation and I reinvented Reliance by following a two-pronged strategy: innovating and expanding existing businesses and building new growth engines. I am happy to inform you that Isha, Akash, and Anant are doing what I did 25 years ago, but with greater ambition and a much larger financial and professional base. Under my active guidance and mentorship of all our directors, they are aggressively expanding existing businesses while laying the foundation for new ventures. I envision each of these ventures growing as big as today's Reliance in the times ahead. Let me outline our 5 major value creation pathways. First, our oil to chemicals business, the mainstay of Reliance so far, will increase earnings as soon as the geopolitical situation improves. Simultaneously, and more importantly, we are reinventing this business to create a new revenue stream less vulnerable to external volatility. We will convert all the crude oil we process into new materials: carbon fiber, specialty materials, green chemicals, and much more. This new vision will drive margin expansion and lay the foundation for our oil to chemicals and new materials business. Second, our new energy business has entered the phase of accelerated commissioning and early revenues. The integrated solar manufacturing and our advanced battery platform will achieve one of the world's lowest cost of RTC green power. It will also enable the world's most competitive green hydrogen and green chemicals ecosystem. Our foray into underground coal gasification business has immense growth potential. Our CBG business is ready to be scaled up as the world's largest bioenergy business. Besides making India largely self-dependent in energy, all these initiatives will emerge as perpetually profitable investments. Therefore, I am absolutely confident that soon the new energy has the potential to become one of the largest earnings engine for Reliance. Third, for India's self-reliant and accelerated prosperity, Reliance Intelligence is going to be as transformative and consequential as our new energy business. AI is becoming a multi-trillion-dollar business globally. Reliance Intelligence will lead this business in India. The infrastructure for it is being built at breakneck speed, and it will fully operationalize over the next couple of years. Reliance Intelligence will make AI integral to the daily lives of every Indian and every Indian enterprise. The use case for AI are growing by the day. Hence, I envision this business to become one of Reliance's most prolific growth platforms. Fourth, our FMCG business is a new multi-billion-dollar growth engine. We plan to grow it into India's largest FMCG company and among the biggest in the world. It is already among the top few players in various categories and is expanding globally. It recently entered Europe and Africa and will enter many more global markets going forward. Our FMCG growth path is neatly aligned to that of Reliance Retail. Both are anchored in our plan to create India's most advanced manufacturing platform and a distribution and export platform with tens of thousands of small, medium, and large partners. All our product baskets and brands will get fast global access through the export platforms. On the other hand, our B2B2C platform is designed to empower millions of merchants and kiranas in India. In short, our integrated manufacturing, retail, and exports vision will create unprecedented value for all stakeholders. Fifth, our export vision goes far beyond our FMCG business.
India has an urgent need to boost exports, to establish and emphasize India's global competitiveness across manufacturing, gems and jewelry, agriculture, horticulture, and other areas. Reliance has long been India's largest merchandise exporter with a proven globally competitive world-class platform for energy and materials export. Leveraging this experience, Reliance aims to become an anchor institution for developing a globally competitive, multi-sector export hub with a target to enable $125 to $150 billion in exports by 2032. In this way, we will enlarge global markets for Made in India brands. Hiring the best talent for this new venture has already begun. This scalable platform will strengthen India's export ecosystem and external economic resilience. This ambition is not only about creating a larger Reliance, it is about creating a stronger India. Taken together, these 5 pathways create a uniquely diversified growth architecture spanning energy, materials, digital infrastructure, artificial intelligence, consumer businesses, and global exports. My dear shareowners, every generation is presented with a defining opportunity. Ours is the opportunity to participate in India's emergence as one of the world's leading economic and technological powers. Reliance is uniquely positioned to contribute to this transformation. We have the scale, we have the talent, we have the technology, we have the financial strength, and above all, we have the conviction and execution prowess to think long-term and invest in the future. The businesses we built yesterday created tremendous value. The businesses we are building today will create even greater value tomorrow. I have never been more confident about Reliance's future, and I have never been more optimistic about India's future, because the two are inseparable. My dear shareholders, I have always believed that great companies are defined not by the tenure of a single leader, but by the strength, resilience, and longevity of the institutions they build. This is how Reliance has emerged as India's proud and most prized national business institution. Our achievement itself heightens our responsibility towards the nation in the future. Keeping this in mind, we are building Reliance for the ages. To this end, we are implementing a 5S vision for institutional perpetuity at Reliance. Let me explain each of these 5 elements. The first S is succession. Isha, Akash, and Anant have now completed 3 transformative years on the board of Reliance Industries. Isha leads consumer businesses, Akash leads technology businesses, and Anant leads the energy businesses. By leading individual business verticals, they are simultaneously working towards the holistic growth of everything under the Reliance ecosystem. They are 3 bodies, 1 soul. Their soul is Reliance. One single, indivisible Reliance, now and forever. Furthermore, to assist Isha, Akash, and Anant, we have groomed as many as 500 young leaders in their 30s and 40s in various businesses. They bring top-notch domain expertise, technological fluency, and first-generation's passion to surpass expectations. They are being mentored by seniors to ensure that the institutional culture of Reliance is upheld and the bar is continually raised. Even as I continue to provide hands-on leadership, the generational transfer of day-to-day management at Reliance is almost complete. In short, dear shareholders, the future of your company is not only in safe hands, but in the hands that will take Reliance to far greater heights. The second S is systems. Reliance has institutionalized
world-class systems for governance, risk management, capital allocation, talent development, and technological leadership. These systems make Reliance immune to internal risks and capable of handling external risks. The third S is standards. All our systems are driven by very high standards of performance, excellence, integrity, transparency, innovation, and compliance. The fourth S is spirit. The founding spirit of Reliance to create wealth for the nation and to offer product and services of the highest quality and affordability that bring joy to the lives of Indians forms the invisible architecture of Reliance culture. Technology can enhance productivity, but it is this spirit that will continue to drive Reliance's ambition and a sense of purpose. The fifth and final S is sustainability. Sustainability is at the core of everything we do at Reliance. For us, economy and ecology are the two inseparable sides of the same coin. Dear shareholders, as I stand before you today, I am reminded of the extraordinary privilege of serving this company and attending every Reliance AGM over the last 49 years. Over these 49 years, I have watched a single product company evolve into a national institution spanning multiple industries with a global reputation. It was built by a man who did not inherit a silver spoon, Dhirubhai Ambani. All he possessed was an uncommon clarity of purpose and a determination to realize this purpose with diligent performance. He infused that purpose into the superlative team he built. The purpose was to make India prosperous and strong and to demonstrate to Indians and the world at large that we too can become an industrial powerhouse second to none. We did not deviate from his purpose during the generational transition 25 years ago. And there won't be the slightest deviation from the founder's purpose in future when a new generation of leaders takes full charge of Reliance and its offshoots. My most esteemed co-owners of Reliance, we are proud of what Reliance has achieved so far, but it fills us with humility to realize that our motherland expects much more of us. Therefore, the next 2 decades of Amrut Kal are crucial for Reliance and for all other Indian businesses. We must intensify our efforts many times to do much more and much better. The noble mission of Viksit Bharat by 2047 is beckoning all of us. It has mandated that all Indian businesses build a modern, holistic India, an India of equity, fairness, and harmony for all, and an attractive model for the rest of the world. To work for this patriotic mission is our duty and also our highest reward. As I keep reiterating, this mission can be achieved only through collaboration between the government, the industry, and the people. Every Indian institution, every Indian company, and every Indian citizen must raise their aspirations and align their energies. The holy Rig Veda teaches us, may we march forward with a common goal. May we work together in harmony and empathy. May we share our thoughts for integrated wisdom. May we follow the example of our ancestors who achieved higher goals by virtue of being united. In this endeavor, Reliance recommits unreservedly to playing its fullest role. Dear shareholders, I take this opportunity to convey my sincere gratitude to all our board of directors for their invaluable counsel and stewardship. I extend my heartfelt thanks to all our employees, our greatest strength, whose passion and perseverance have driven Reliance to new milestones. I am equally grateful to our business partners for their steadfast collaboration in delivering excellence. I also appreciate the continued support of government authorities and regulatory institutions. Most importantly, I offer my deepest appreciation
to all our shareholders, India and its people for their continued trust and confidence in brand Reliance. Your support remains the foundation of our journey and success. Thank you. Jai Hind, Jai Shri Krishna. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज।
नमस्कार। और आज के रिलायंस एजीएम की जो सबसे बड़ी घोषणा है, जो सबसे बड़ा ऐलान है, वो है जियो का बिग बैंग आईपीओ। और अब दाखिल कर दिया गया है डीआरएचपी। ताजा खबर, एक्सचेंज पर सेबी के साथ डीआरएचपी ये दाखिल कर दिया गया है और 27 करोड़ शेयरों का फ्रेश इशू होगा। ये ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये 27 करोड़ शेयर्स का एक फ्रेश इशू जियो प्लेटफॉर्म्स लेकर आ रहा है और ये इसका साइज होने जा रहा है। कंपनी के मुताबिक ज्यादातर रकम का इस्तेमाल, करीब 27,500 करोड़ की जो रकम है उसका इस्तेमाल कर्ज चुकाने में किया जाएगा और बाकी का जो है वो कॉर्पोरेट कामों के लिए इस्तेमाल में होगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर, रिलायंस जियो के आईपीओ का डीआरएचपी सेबी के साथ दाखिल हो गया है। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज।
नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। जियो प्लेटफॉर्म्स के बिग बैंग आईपीओ का इंतजार अब खत्म हो गया है। डिजिटल धुरंधर जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने आज कंपनी की 49वीं एजीएम में लिस्टिंग की टाइमलाइन को बताया, शेयर किया साफ साफ। कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का डीआरएचपी भी दे दिया है। उम्मीद की जा रही कि जिस तरह जियो ने टेलीकॉम में बड़ी क्रांति की है, वैसे ही वो बाजार में लिस्ट होने के बाद निवेशकों की वेल्थ क्रिएशन का जरिया भी बनेगा। डिजिटल इंडिया के पोस्टर बॉय जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ पर चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे इसमें निवेशकों के लिए क्या है, आगे ये किस तरीके से भारत के पूरे टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर एक तरीके से बदल सकता है। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कुछ खास मेहमान, बीएसएनएल के पूर्व सीएमडी और सबमर के इंडिया हेड अनुपम श्रीवास्तव जी, ट्रोकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के डायरेक्टर पार्थिव शाह, एसएमआईएफ के रिसर्च हेड शरद अवस्थी और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ पर और विस्तार से बातचीत करें उससे पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसके डिटेल्स को। वैसे तो देखिए, डीआरएचपी फाइल हो चुका है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो जो रकम जुटाई जाएगी वो प्राइमरीली इस्तेमाल होगी कर्ज चुकाने में। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक फ्रेश इशू है, ये ऑफर फॉर सेल नहीं है। यानी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो हैं, उनको ये प्रोसीडिंग्स नहीं जाएगी। लेकिन आशीष आ चुके हैं, उनसे समझते हैं इस आईपीओ की पूरी डिटेल। आशीष। बिल्कुल ठीक, विपिन जी कहते हैं ना एक अंग्रेजी में वॉक द टॉक। आपको याद है पिछले साल एजीएम में मैनेजमेंट में कहा था कि हम 2026 के फर्स्ट हाफ में एम कर रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म्स को लिस्ट करने की। लीजिए, जून में हम खड़े हैं और आज डीआरएचपी की फाइलिंग होती हुई। और जो बज़ है जियो प्लेटफॉर्म्स को लेकर, उसके अराउंड लेकर, समझिए ये कोई आम टेलीकॉम कंपनी नहीं है जो लिस्ट होने आ रही है, बल्कि एक मैसिव इंटरकनेक्टेड डिजिटल और टेक इकोसिस्टम है। और इस लिस्टिंग के थ्रू पब्लिक मार्केट का टेस्ट हो रहा होगा इस तरह की मैसिव ऑफरिंग के लिए। दरअसल एक डिजिटल कॉन्ग्लोमरेट है जियो प्लेटफॉर्म्स। समझाता हूं, हम लोग प्राइमरली इसको जानते हैं इसकी सब्सिडाइज कनेक्टिविटी को लेकर, अफोर्डेबल 5G 4G डेटा, ब्रॉडबैंड वगैरह। पर ये डिजिटल सर्विसेज क्रॉस सेल करती है जियो सिनेमा, जियो टीवी जैसी सेवाएं, एंटरप्राइजेस के लिए क्लाउड, एआई, नेटवर्क सॉल्यूशंस मुहैया कराने का काम करती है। ग्लोबल टेक पार्टनरशिप्स हैं मेजर कंपनीज, मिसाल के तौर पे गूगल वगैरह के साथ, जिसमें अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स बनाने से लेकर डिजिटल सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए इस कंपनी ने करार कर रखे हैं। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जियो प्लेटफॉर्म्स के पास। ग्लोबली अनमैच्ड फिजिकल और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट है इस देश का। नंबर्स देखिए, आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एज ऑन मार्च 26, टोटल डेटा ट्रैफिक 241 एक्साबाइट्स। विपिन जी, मुझे तो साले समझ में ही नहीं आया था, तो मैंने एक्साबाइट्स को समझने की कोशिश करी। एक एक्साबाइट मतलब आप 1 बिलियन HD मूवीज स्टोर कर सकते हैं। 1 बिलियन, सिर्फ एक एक्साबाइट की बात कर रहा हूं मैं। सब्सक्राइबर्स 52 करोड़ से ज्यादा, 5G यूजर्स उसमें से 27 करोड़ के आसपास, 27 मिलियन होम्स कनेक्ट कर रखे हैं इस कंपनी ने। और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखिए FY26 के, साल दर साल आय 14.25% बढ़ी, इबिटा में तकरीबन 18% का जंप, और पिछले साल FY26 में मार्जिन्स 160 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए। क्या ड्राइव कर रहा है ये परफॉर्मेंस? इनका मैसिव 5G स्केल। पिछले साल 40% साल दर साल की ग्रोथ 5G में नजर आई। आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो इंप्रूव हो रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कंपनी स्मार्टली ब्रॉडबैंड को मोनेटाइज कर रही है। जियो एयर फाइबर होम कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। और इस कंपनी को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे जहन में वो है, आपको याद होगा वो मिड 2020s की बात, जब कोविड का प्राइम था, उस समय कॉर्पोरेट हिस्ट्री की, कॉर्पोरेट इंडिया की सबसे रिमार्केबल फंड रेजिंग्स में से एक हुई थी। 3 महीने के अंदर दुनिया के टॉप टेक जायंट से लेकर दुनिया की दिग्गज सॉवरेन फंड्स सब ने मिलकर इसमें खरीदारी करी थी, स्टेक्स एक्वायर करे थे। इनफैक्ट सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं।
पर वो लॉकडाउन के टाइम पे 33% स्टेक बेच के सबको मार्की इन्वेस्टर्स को चेक इन कराया था। और आज ये कंपनी जो अपना डीआरएचपी फाइल कर रही है, जैसे आपने मेंशन करा, 27 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑन ऑफर, सारे के सारे फ्रेश इशुएंस के जरिए, यानी कि कोई ये मार्की मौजूदा इन्वेस्टर एक शेयर इस ऑफरिंग में बेचता हुआ नहीं नजर आ रहा। और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि स्ट्रीट, मेरे ख्याल से आपके पैनल से आप चर्चा करोगे, सब मान के चल रहे थे ऑफर फॉर सेल होगा, ये पुराने इन्वेस्टर्स कुछ स्टेक रिड्यूस कर रहे होंगे, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए पूरी तरह से फ्रेश इशुएंस आपके सामने। डेफिनेटली ये सरप्राइज है। बाकी बहुत डिटेल में आशीष आपने बताया कि एग्जैक्टली व्हाई दिस इज नॉट जस्ट अ टेलीकॉम कंपनी आईपीओ, ये एक टेक जायंट का आईपीओ है जो अपने आप में एक अलग ही मुकाम हासिल करेगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन बिल्कुल जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त वो सुदीप सर यही कि ये ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। बिल्कुल सही विपिन जी, और जैसे आशीष जी ने कहा, हम लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन मार्केट में था कि ये मिक्स होगा ऑफर फॉर सेल और कुछ फ्रेश इश्यूएंस, पर अब देखिए ये पूरा फ्रेश इश्यूएंस है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंप्लीट जो डेट है वो रिपेमेंट हो जाएगा। लगभग 27,500 करोड़ का डेट रिपेमेंट होगा, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा जो प्रोसीड्स कंपनी को मिलेगा। तो ये अच्छी बात है, बैलेंस शीट और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डेट रिडक्शन डेट खत्म हो रहा है। तो उम्मीद ये है कि परफॉर्मेंस, जो मार्जिन परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव होगा आने वाले दिनों में। और ये सबसे बड़ा आईपीओ तो यही होगा। कल हम लोग बात कर रहे थे एलएससी का आईपीओ, सबसे बड़ा आईपीओ इंडिया का होने वाला है, और आज ये डीआरएचपी जमा होने के बाद लग रहा है ये डेफिनेटली इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ। आज तक जो आईपीओ हुए हैं उसमें से ये स्थापित होगा सबसे बड़ा आईपीओ बोल के। और एक खास बात है कि जैसे ही हम लोग ये डीआरएचपी देखना शुरू करेंगे, थोड़ा समझेंगे, और कंपैरिजन भारतीय एयरटेल के साथ शुरू होगा, और उस कंपैरिजन में वैल्यूएशन को इंप्यूट करना चालू करेंगे हम लोग, और उससे मुझे लगता है बहुत कुछ सामने आएगा और बहुत अच्छी तरह से वैल्यू डिस्कवरी होने की संभावना रहेगी। जी, तो आपने कहा कि कंपैरिजन होगा, बहुत अच्छी तरह से वैल्यू डिस्कवर होगी। अनुपम श्रीवास्तव सर है हमारे साथ, एक्स-सीएमडी बीएसएनएल। अनुपम सर, जैसा आशीष ने भी कहा, इनफैक्ट अभी संदीप जी ने भी कहा, वैल्यू डिस्कवर होगी, लेकिन उसका आधार क्या होगा? कि क्या ये एक सिंपल किसी टेलीकॉम कंपनी का आईपीओ नहीं है? जिस तरीके से जियो ने अपने आप को स्टैब्लिश किया है पिछले सालों में, वो एक टेक कंपनी से आगे बढ़ चुकी है, एक पूरा इकोसिस्टम बन चुकी है, और अब तो एआई का जो इंटीग्रेशन है, जिस पे दुनिया की बहुत सारी चीजें निर्भर कर रही हैं, वो भी अपने अंदर समावेशित कर रही हैं। तो क्या ये सब कुछ मिला के इसको एक स्टैंड आउट बना देगा, अलग थलग, मतलब अलग लेवल पे, अलग मुकाम पे खड़ा करेगा? ये देखिए, बिल्कुल तैयारी तो सिर्फ उसी की है, क्योंकि जो पहले हमारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट में टेलकोस कहलाते थे, अब आगे के समय में टेककोस कहलाएंगे। तो उनका काम सिर्फ मोबाइल सर्विसेज या ब्रॉडबैंड देना नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीओ के जरिए जो धनराशि इकट्ठी की जा रही है, उसका उपयोग टेक को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, एआई को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। और जैसा कि सुना जा रहा है कि बहुत सारे डेटा सेंटर्स, एआई बेस्ड डेटा सेंटर्स में इसका उपयोग करा जाएगा। और अगर आज शायद किसी ने वहाँ के चेयरमैन की स्पीच पढ़ी होगी, तो उनमें भी मेन फोकस एआई को आगे बढ़ाने का रखा गया है। भारत को एआई के फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए उनका उद्देश्य है, और डेटा सेंटर में फंडिंग करने का उनका उद्देश्य है। इनवीडिया की GB300 चिप्स, जो कि एक वन ऑफ द लेटेस्ट चिप्स अवेलेबल हैं H100 H200 के बाद, वेरारियोबिन के पहले का जो चिप्स है, वो लगा के एआई सिस्टम को बढ़ाया जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके जरिए ये टेलको का सफर टेक को एक टेक्निकल कंपनी और एक विश्व स्तर की टेक्निकल कंपनी बनने की राह में अग्रसर होगी। पार्थिव, वही सरप्राइज, उसी का एक और सवाल कि दिस इज अ फ्रेश ऑफर, ये ऑफर फॉर सेल नहीं है। और जैसा आशीष भी कह रहे थे और हमने भी कहा कि मेटा, गूगल, मुबादला, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर, लेकिन निकलने के लिए तैयारी, नॉट अ सिंगल शेयर। व्हाट डज इट मीन कि वो अभी भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी जियो के अंदर देख रहे हैं?
एब्सोल्युटली एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम के पार्टनर्स है जैसे कि मेटा है, गूगल है, दे वांट टू बी विद दिस ग्रोथ स्टोरी। और वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जो हम एआई इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं पूरे जियो प्लेटफॉर्म्स में, वो अभी जस्ट शुरू हुआ है। बेसिकली इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बिकॉज आज की तारीख में जो भी हम 75,000 करोड़ का एबिटा बिजनेस जियो प्लेटफॉर्म का देख रहे हैं, दैट प्रीडोमिनेटली कम्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल टेलीकॉम सर्विसेज। और जिस तरह से चेयरमैन साहब ने और डेफिनेटली आनंद सर ने बताया कि किस तरह से एआई एजेंट्स और एआई का पूरा इंटीग्रेशन होगा, एंड एआई नॉट ओनली फ्रॉम एंटरप्राइज स्टैंड पॉइंट, उनको ऐसा चाहिए कि जियो प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो एआई का पेनिट्रेशन है दैट शुड बी टोटली डेमोक्रेटाइज, वेदर इट इज फार्मर्स, वेदर इट इज प्लम्बर्स, एनीबडी इट मे बी। इनका जो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट है एआई के थ्रू बहुत बड़े पैमाने पे होना चाहिए। और जिस तरह से रिसेंटली हमने अनाउंसमेंट देखी कि मेटा और रिलायंस एक डेटा सेंटर की बात की है, जैसे हमने देखा गूगल भी काफी टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात कर रहा है, काफी R&D स्पेंड्स की बात कर रहा है। जियो प्लेटफॉर्म इज उनका जो रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल रैंकिंग ऑफ इनोवेशन, वो 20th स्तर पे आया है, जहां पे उन्होंने बहुत सारे पैटर्न्स आई थिंक रजिस्टर किए हैं। गोज टू शो कि ये स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। और एक बहुत बड़ी आई थिंक जो गाइडेंस चेयरमैन सर ने दी है इन टर्म्स ऑफ आने वाले 5 साल में जो पूरा ग्रुप लेवल का एबिटा है जो अराउंड अभी 2.7 लाख करोड़ है, उसको डबल करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर विल बी जियो प्लेटफॉर्म्स। तो उस लिहाज से आई थिंक ये हर एक पार्टनर्स को ये ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रखनी है। मुझे लग रहा है कि आईपीओ के द्वारा काफी नए ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी आएंगे, तो आई थिंक डेट फ्री कंपनी हो जाएगी ऐसा दिख रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स डेफिनेटली भारतीय एयरटेल से जियो प्लेटफॉर्म्स को काफी अच्छे मल्टीपल्स मिलेंगे, बिकॉज ग्रोथ विजिबिलिटी ऑफ न्यूअर बिजनेसेस इज देयर, जहां पे आरपो इंक्रीज होने की काफी क्षमता दिख रही है। राइट शरद, तो देखिए अनाउंस कर ही दिया कंपनी ने कि वो पूरी जो प्रोसीडिंग्स है उसमें से 27,500 करोड़ रुपए जो अपना एग्जिस्टिंग डेट है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और बाकी प्रोसीडिंग्स कॉर्पोरेट दूसरे चीज़ों के लिए जाएगी। क्या ये पैसा अगर एआई एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए लगता वो बेहतर होता है, या आप डेट क्लियर करें और आपके पास बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हैं और बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे जैसे पार्थिव कह रहे थे, तो एक निवेशक के लिहाज से इसे कैसे समझे? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में रिलायंस के डेट लेवल्स को लेके बीच बीच में अनिश्चितताएं बनती रही हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि आपका डेट एक बार रिपेमेंट हो जाता है। और अब जियो प्लेटफॉर्म्स का जो मेन बिजनेस है आपका टेलीकॉम सब्सक्राइबर का और इसके अलावा जो FTTH का, मेरे हिसाब से ऑलरेडी वो कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया है। तो जो खर्च हम लोगों को एआई वगैरह पे करना है और इंटीग्रेशन पे और प्लेटफॉर्म बिजनेस में थोड़ा बहुत कैश बर्न हो सकता है, तो वहाँ जो जरूरत है मेरे हिसाब से, चूंकि जियो जो टेलीकॉम वाला सेगमेंट है वो ऑलरेडी मैच्योर हो गया है, प्लस मेरे हिसाब से FTTH में आने वाले समय में और इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। आरपू इम्प्रूवमेंट का सबसे ज्यादा स्कोप भारतीय और जियो में अगर आप कंपेयर करें तो जियो में है, तो वो और कैश फ्लो पॉजिटिव होगा। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट वही चीज प्रीएम्प्ट कर रही है कि ये डेट रिपेमेंट पे यूज कर लेना उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि काफी बड़ा हिस्सा उसमें निकल जाता है और जो कैश फ्लो जनरेशन होगा वो इनके लिए काफी होगा नए वेंचर्स में पैसा लगाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए उनको फ्रेश इन्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, चूंकि ये बिजनेसेस अब मैच्योर हो गए हैं और अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि टेलीकॉम बिजनेस लार्जली टॉप लाइन टू बॉटम लाइन कन्वर्जन मैन्युफैक्चरिंग की तरह नहीं है, सर्विस ओरिएंटेड है। तो स्केल जैसे जैसे बढ़ता है उसका सीधा फायदा आपको बॉटम लाइन और कैश फ्लोज पे आता है। तो मुझे लगता है प्लानिंग वही है कि वो जो पैसा कैश फ्लो में जनरेशन होगा लगातार, वो मोर देन एनफ होगा एआई वगैरह और जो नए वेंचर्स में इनको फोकस करना है विद इन जियो प्लेटफॉर्म्स। राइट, तो और भी बहुत सारे सवाल हैं जो एक इन्वेस्टर के मन में आएंगे कि क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू अनलॉक करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज की और खुद की भी, और साथ में अब क्या ग्रोथ के नए मॉडल्स होंगे 5G और आरपू के अलावा। कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल इस आईपीओ के इर्द गिर्द। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बातचीत जारी रहेगी। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज।
वेलकम बैक। तो आ रहा है जियो का बिग बैंग आईपीओ अनाउंस हो चुका है, डीआरएचपी दाखिल हो चुका है। 27 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू होगा ये, और प्रोसीडिंग्स को कंपनी मेनली अपना कर्ज उतारने में इस्तेमाल करेगी। तो ये जानकारी है इसके बारे में, और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब क्विकली, क्योंकि समय कम रहेगा, कुछ सवाल अपने मेहमानों से जल्दी जल्दी। अनुपम सर, ये बताइए कि देखिए, जैसा अभी भी जिक्र हो रहा था कि टेलीकॉम बिजनेस जो प्योर टेलीकॉम है वो एक हद तक मैच्योर हो गया, आरपूज हो गए, 5G हो गए, ये सब हो गया। नए एवेन्यूज कहां मिलेंगे कंपनी को ग्रोथ के लिए? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, नए एवेन्यूज तो आपको एयर फाइबर जो है 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस में मिलेंगे, और डेटा और एआई के क्षेत्र में मिलेंगे। आज अगर मैंने जब भी जो स्पीच पढ़ रहा था, उसमें मुझे एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि जिस तरह से एआई और डेटा सेंटर के विकास की बात जियो के उसमें कहा जा रहा है, और उसमें एक शब्द जो मुझे बहुत आकर्षित किया वो था डायरेक्ट लिक्विड कूलिंग बेस्ड डेवलपमेंट। ये एक इतना पावरफुल डायरेक्शन है इस पूरे जियो के प्रोजेक्ट का, जिससे जो हमारे डेटा सेंटर लगेंगे उसमें जो पावर का वेस्टेज होता है, पानी का वेस्टेज होता है। आज सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि हम डेटा सेंटर तो लगा देते हैं, परंतु उसमें पानी का बहुत वेस्टेज होता है। और जियो अपने इस आईपीओ के जरिए जो इन्वेस्टमेंट में लेके आ रहा है डायरेक्ट लिक्विड कूलिंग चिप्स, वो एक बहुत बड़ा, मुझे तो उस शब्द ने बहुत आकर्षित किया कि उसके जरिए जो एआई की चिप्स जो बहुत गर्म होती हैं उसको कूलिंग करने का जो मैकेनिज्म है वो जो लेके आया जा रहा है, मुझे उसने बहुत बहुत प्रभावित किया। और जब देश के इतनी बड़ी कंपनी का इतना बड़ा चेयरमैन ये बात करता है तो मायने रखता है कि अब एक देश एक सही दिशा की ओर जाएगा, एआई के विकास में, डेटा सेंटर के विकास में, और वहीं से अब रेवेन्यू आएगी। क्योंकि 5G और 4G के आरपू 128 करोड़ हम कस्टमर हो चुके हैं, वहां विकास करना थोड़ा मुश्किल है, पर जो भी रेवेन्यू अब आएगा वो इन्हीं क्षेत्रों से आएगा जो कि डेटा के उपयोग पर आधारित रहेगा। सुदीप साहब, एक और इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे ये उठेगा कि अब रिलायंस जियो के आईपीओ के बाद जो एक कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट साथ में चलता था, अब क्या ट्रू वैल्यू अनलॉक होगी जियो की? और वो एक फायदे की बात तो होगी, निवेशकों के लिए वहां पर एक बड़ी डिस्कवरी होगी। जी बिल्कुल सही। देखिए, इसमें दो चीज बताना चाहूंगा कि आज जियो का क्या हो रहा है। जियो का कुछ नए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, पर रिलायंस का जो होल्डिंग है वो तो होल्डिंग रहेगा। तो वो जो आप कह रहे हो कंग्लोमरेट डिस्काउंट से निकल जाना, वो बात तो रिलायंस एज ए रिलायंस शेयर होल्डर मुझे नहीं लगता है हम लोगों को मिलेगा। अभी भी वो कंग्लोमरेट के अंदर में जियो का शेयर होल्डिंग रहेगा, तो वो कंग्लोमरेट डिस्काउंट वाली बात रिलायंस शेयर होल्डर के लिए शायद रह जाएगा। पर अच्छी बात यहाँ पे ये होगी कि रिलायंस जियो के जो शेयर होल्डर होंगे उनके लिए ये कंग्लोमरेट डिस्काउंट वाली बात नहीं आएगी। जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, इट विल बी अ प्योर प्ले टेक कंपनी, टेलीकॉम कम टेक कंपनी, और उसी हिसाब से वैल्यूएशन मल्टीपल्स इनके आएंगे। आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये कंग्लोमरेट डिस्काउंट धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी निकलेगा, क्योंकि एक लेवल पे शायद रिटेल का भी कुछ वैल्यू अनलॉकिंग की इनिशिएटिव लिया जाएगा। आप रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देखिए, जो रिलायंस रिटेल का एक हिस्सा है, वो उसका आज के दिन में टर्नओवर सबसे बड़ा एफएमसीजी कंपनी एचयूएल के बाद ही है। नेस्ले और रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के टर्नओवर लगभग एक जैसा हो गया है। तो आप सोचिए, पिछले 2 साल में मतलब ये जो कंज्यूमर बिजनेस है वो सारे एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर बिजनेसेस को पीछे छोड़ गया है, और अभी सिर्फ रिलायंस और नेस्ले के बराबर है, और रिलायंस एचयूएल आगे है। तो वैल्यू अनलॉकिंग आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर के लिए, पर यहाँ पे तो शुरुआत ही है। जी बिल्कुल। पार्थिव, वेरी क्विकली, जैसा अभी सुदीप जी भी जिक्र कर रहे थे, क्या ये आईपीओ का इतिहास का इस पूरे उसका सबसे बड़ा इशू आईपीओ होने जा रहा है?
यस एब्सोल्युटली, आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है। जो डिटेल्स आई है बाहर और अराउंड 27-28,000 करोड़ की जो बात हो रही है, तो इट विल बी द बिगेस्ट आईपीओ। और आपने बताया नए रेवेन्यूज स्ट्रीम्स, तो यहाँ पे उन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन की भी बात की है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी, लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स की बात की है, उन्होंने एंटरप्राइज एआई की बात की है, एआई फैमिली एआई एजेंट की बात की है। तो ये बहुत सारे रेवेन्यूज है जहाँ पे आगे जाते जियो प्लेटफॉर्म्स आई थिंक बहुत सारा पैसा मोनेटाइज कर सकता है इन टर्म्स ऑफ बेटर आरपूस गोइंग है। जी, तो चलिए, एक बड़े बिग बैंग आईपीओ के लिए डीआरएचपी दाखिल हो चुका है और उसकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें और शेयर धारकों के लिए क्या इसमें संदेश है, आगे कंपनी किस तरीके से जाएगी, क्या नए एवेन्यूज है और कैसे ये ग्रोथ के नए रास्ते खोजेगी। मैं मुकेश जी ने जो अपनी स्पीच में कहा उसकी एक लाइन बड़ी अच्छी थी, व्हाट इज गुड फॉर इंडिया इज गुड फॉर RIL। उसी प्रेरणा, उसी दिशा के साथ ये बिग बैंग आईपीओ जियो का अब आ चुका है 27 करोड़ शेयर्स के साथ, और ये फ्रेश ऑफर है, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं, और देश का सबसे बड़ा आईपीओ बनने की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए कुछ बेहद बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। Isha, Akash and Anant are heading the Jio IPO process and will lead the next generation of value creation opportunities in the future. आने वाला है बाजार का धुरंधर आईपीओ। रिलायंस की एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी का ऐलान। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ के लिए सेबी में अर्जी दाखिल। 27 करोड़ शेयरों का होगा फ्रेश इशू। कोई ऑफर फॉर सेल नहीं। भारत का एआई भारतीय भाषा में बोलेगा, भारत के दिलों को जोड़ेगा, भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलेगा। एआई में रिलायंस की बड़ी छलांग। एजीएम में आकाश अंबानी का ऐलान। जामनगर में सोवरेन एआई इंफ्रा हो रहा है तैयार। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पर खास फोकस। जियो लॉन्च करेगा कई लियो सैटेलाइट्स। I am proud to announce that Reliance has signed a landmark $3 billion long-term supply agreement with Samsung C&T for green ammonia. रिलायंस का ग्रीन और क्लीन एनर्जी को पुश। एजीएम में बोले अनंत अंबानी। सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन हो रही है ऑपरेशनल। बैटरी गीगा फैक्ट्री इस साल होगी कमीशन। $3 बिलियन का ग्रीन अमोनिया एग्रीमेंट भी साइन। न्यू एनर्जी मिशन से मिलेंगे 2 लाख ग्रीन जॉब्स। I'm proud to share that we have received approval from the Government of Maharashtra to establish a state-private university. एजीएम में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का ऐलान। मुंबई में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी को मंजूरी। रिलायंस स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाएगी रिलायंस फाउंडेशन। एआई नई टेक्नोलॉजी पर रहेगा फोकस। आखिरी घंटे में बाजार में निचले स्तर में आज रही रिकवरी। निफ्टी सेंसेक्स निचले स्तर से सुधर कर हुए बंद। मिड कैप इंडेक्स निचले स्तर से संभल कर बढ़त पर आया। फार्मा, डिफेंस और सीपीएससी शेयरों में आज रही खरीदारी। टेलीग्राम पर जारी रहेगा अस्थायी बैन। दिल्ली हाईकोर्ट का अस्थायी बैन हटाने से इनकार। नीट परीक्षा को लेकर केंद्र का टेलीग्राम पर एक्शन। दान चोरी विवाद पर योगी आदित्यनाथ का पहला बयान। कहा गोली चलाने वाले उपदेश न दे, एसआईटी जांच में हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। 21 जून को शिंदे गुट में शामिल होंगे उद्धव के 6 बागी सांसद। मुंबई में होंगे शामिल। 21 जून 2022 को ही एकनाथ शिंदे ने की थी बगावत। तो आज की कुछ सबसे बड़ी खबरें निकल कर आई हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं एजीएम से, जो काफी दिलचस्प रही। आज की एजीएम में वैसे तो कई ऐलान हुए, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान रहा जियो के आईपीओ का। जियो ने सेबी के पास आईपीओ के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। ये 27 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू होगा। इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं होगा। एजीएम में आईपीओ का ऐलान खुद चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किया। With great delight, let me tell you that the board of Jio Platforms has approved the draft red herring prospectus earlier today, and it will be filed with SEBI today. This is a deeply emotional moment for me, for the entire Reliance family, and for millions of its shareholders. The relationship Reliance shares with its shareholders is a deep and sacred relationship founded on pride, trust, respect, and shared growth. The commitment to shared growth was deeply personal to Dhirubhai. It is equally sacred to me. Imbibed in the same spirit, Isha, Akash, and Anant are heading the Jio IPO process and will lead the next generation of value creation opportunities in the future. The proposed listing of Jio will demonstrate to the world that India can build technology companies of global scale, global capability, and global value. I assure you and all prospective new investors that a brighter future awaits Jio. जियो का आईपीओ कैसा होगा, क्या इसमें और इंपॉर्टेंट चीजें, और खुद जियो आज जब ये आईपीओ लेकर आ रही है तो वो किस मुकाम पर खड़ी हुई है, पूरी डिटेल बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा।
जी वो कहते हैं ना वॉक द टॉक। पिछले साल की एजीएम में मैनेजमेंट ने गाइड करा था कि साल 2026 के फर्स्ट हाफ तक हम जियो प्लेटफॉर्म्स को लिस्ट करने की तैयारी करेंगे। और लीजिए हम जून में बैठे हुए हैं और आज इस कंपनी ने अपने आईपीओ का डीआरएचपी दाखिल कर दिया है। और जियो प्लेटफॉर्म्स को लेकर बस इसीलिए नहीं है कि एक टेलीकॉम कंपनी है, बल्कि एक पब्लिक मार्केट टेस्ट है कैसे वो एक मैसिव इंटरकनेक्टेड डिजिटल और टेक इकोसिस्टम को पचाते हैं। ये एक कंपनी एक डिजिटल कॉन्ग्लोमरेट है। इसके आंकड़े देखिए, मार्च 26 में ईयर एंडिंग टोटल डेटा ट्रैफिक 241 एक्साबाइट्स, सब्सक्राइबर्स 52 करोड़ से ज्यादा, 5G यूजर्स तकरीबन 27 करोड़। और इस कंपनी के डिजिटल सर्विसेज का परफॉर्मेंस देखिएगा। आय में पिछले साल FY26 में 14% का जंप, इबीटा तकरीबन 18% उछला और मार्जिन साल दर साल 160 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होते हुए नजर आए। और क्या कारण है इस तरह की परफॉर्मेंस का? मैसिव 5G स्केल। पिछले साल 40% साल दर साल का जंप देखने को मिला। आरपूस जो है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो इंप्रूव होते हुए नजर आए। और ये कंपनी अब अपना ब्रॉडबैंड स्मार्टली मोनेटाइज कर रही है और इसीलिए इस तरह के फाइनेंशियल्स देखने को मिले। पर जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे जहन में रह गया था, वो पीक कोविड टाइम्स थे 2020 के, और 3 महीने के टाइम होराइजन में इस कंपनी ने दुनिया भर की मार्केट टेक कंपनीज, गूगल और मेटा जैसी, दुनिया के टॉप सॉवरेन फंड्स, मुबादला और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जैसे, उन सबको अपना 33% हिस्सा बेचा था। और आज जब इसने अपना आईपीओ फाइल करा है, 27 करोड़ शेयरों का फ्रेश इशुएंस है और इनमें से एक भी मौजूदा इन्वेस्टर एक शेयर नहीं बेच रहा इस आईपीओ ऑफरिंग में। और शायद यही सबसे बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि स्ट्रीट मान के चल रही थी पुराने इन्वेस्टर्स का एक ओएफएस आ रहा होगा, लेकिन इंटायरली एक फ्रेश इशुएंस। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ पर विस्तार से चर्चा के लिए यहां पर हमने आशीष से ये सब कुछ समझा, लेकिन एजीएम में मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बारे में भी काफी विस्तार के साथ बताया। That Reliance posted a record high revenue, a record high EBITDA, and a record high net profit for the financial year 26 despite global challenges. The consolidated revenue stood at 11,75,919 crores, up 9.8% year-on-year. Despite the volatility, rapid scaling up of our retail and digital businesses played a key role in meeting our commitment to doubling RIL's EBITDA over 5 years. Our EBITDA for the financial year 21 was 97,580 crores, which rose to 2,07,911 crores for the year 26. Retail and digital businesses contributed nearly half of the financial year 26 EBITDA. Together, they are increasingly becoming the primary drivers of Reliance's future growth. The net profit for the financial year 26 stood at 95,754 crores, up 17.8% over last year. Friends, Reliance's contribution to India's inclusive economic growth and nation building remains unsurpassed. Reliance has maintained its top position in investing for India's growth. Reliance's capex stood at 1,44,271 crores for the year 26. Over the last 5 years, Reliance's capital expenditure has stood at a massive 6,48,428 crores, or over $68.4 billion, more than any other company in India. RIL की एजीएम में आकाश अंबानी ने कंपनी के मेगा एआई प्लान्स के बारे में डिटेल से बताया। Reliance Intelligence is building India's sovereign AI backbone in Jamnagar. This cutting-edge infrastructure will be powered entirely by clean energy from Reliance's own solar generation from the Kutch Renewable Platform. The first 120 megawatts will be commissioned by the end of 2026. In addition, we are operationalizing an initial fleet of advanced NVIDIA GB300 GPUs. This next generation compute capacity is equivalent to more than 75,000 H100 GPUs
on an AI inference basis. As the first 120 megawatts becomes fully operational, this capacity can scale over 2 lakh H100s equivalent GPUs. This capacity places Reliance amongst the largest AI infrastructure platforms being built anywhere in the world. When compute becomes affordable, innovation becomes inevitable. With network edge AI inference, we will bring advanced AI experiences to affordable devices. When AI becomes ubiquitous and easily accessible, India will not merely participate in the AI century, it will lead it. Unlike global AI platforms that build in English and translate later, Jio is building AI natively in Indian languages. So a farmer querying in Marathi or a student in Tamil gets an AI that thinks and replies in their language. भारत का AI भारतीय भाषा में बोलेगा, भारत के दिलों को जोड़ेगा, भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलेगा. What we're building is an AI for India, AI by India, AI that will one day serve the world. रिलायंस की एजीएम में अनंत अंबानी ने ग्रीन और क्लीन एनर्जी पुश के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रिलायंस $3 बिलियन यानी $3 बिलियन का ग्रीन अमोनिया के लिए करार कर रही है. Green electricity is the foundation, but green molecules are the transformation. Our green chemicals program is advancing on plan. We are on track to commission our alkaline electrolyzer manufacturing gigafactory. We will unlock 4 powerful monetization streams through green molecules. 1. Green urea, strengthening India's food security. 2. Urea ammonium nitrate, UAN, for our fertilizer needs. 3. Green ammonia for co-firing in power generation, displacing fossil fuel emissions in India and export markets. And 4. Biomethanol, a clean transport fuel and chemical feedstock with sustainable aviation fuel applications and with a growing global demand. I am proud to announce that Reliance has signed a landmark $3 billion long-term supply agreement with Samsung C&T for green ammonia, which is among the largest green ammonia offtake contracts in the world. This validates the commercial competitiveness of our green hydrogen platform. We are in advanced discussions for more such exports to Japan, Korea, and Europe with long-term offtake commitments. Our target of 3 million metric tons of green hydrogen equivalent green chemicals capacity in the next 10 years remain firmly in our sight. एजीएम में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने खुशखबरी दी. उन्होंने बताया कि रिलायंस को मुंबई में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है. I'm proud to share that we have received approval from the government of Maharashtra to establish a state private university. Our interim campus at Ulve is already a vibrant center for learning with modern academic, residential, and sports facilities on par with global standards. But what lies ahead is even more transformative. Our upcoming permanent campus at Dronagiri, spread across 410 acres, will be truly world-class in size, design, and most importantly, excellence in academics and research. It will bring together an academic district, a research park, a sports district, a medicity, a residential district, a vibrant arts district with amphitheaters, performance halls, and art houses, an innovation and incubation park where cutting-edge research supports the creation of unicorns. और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आज की कुछ और बड़ी खबरें.
ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। for undertaking buyback of shares. Now, if the company decides not to appoint merchant banker, the activities undertaken by merchant bankers have been assigned to company compliance officer, statutory auditor, secretarial auditor,
and stock exchanges. So there is a very clear table will be provided so that if any company doesn't want to engage a merchant banker, it is very clear that then in that case, who will do what in respect of the buyback. So there will be no difficulty also for the company to go ahead in case they want not to engage merchant banker. It will be up to them whether they want to do that or not. Now, these proposals have been deliberated in the Primary Market Advisory Committee, and public consultation papers were issued. In fact, there were 2 papers on this, April 2 and May 8. The approved amendments incorporate relevant feedback received from PMAC and through the public consultation process. The third decision relates to utilization of intraday borrowing by mutual funds. As you are aware, the board had approved the amendment to SEBI Mutual Fund Regulations 2026, and there, after that, a circular was issued as required, detailing the guidelines. However, there was an issue with the industry that their cash management, they could not really identify for the purposes for which only the purposes which were mentioned in that circular. So there was a consultation which was done, and subsequently now it's been decided that intraday borrowings for various purposes, including pay-in, forex, etc., will be available, and quantum of now, but they have to be squared up, that it shall be responsibility of the AMCs that intraday borrowings are repaid by the end of the day, and any intraday borrowing converted to overnight borrowing shall be within the regulatory limits of 20%. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज।
नमस्कार, वेलकम और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, रिलायंस मेट सिटी स्पेशल। मेट सिटी यानी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप। हम हैं इस वक्त हरियाणा में और इसके झज्जर डिस्ट्रिक्ट में 8000 एकड़ से ज़्यादा में बन रही है रिलायंस की मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप। अपने आप में एक अलग तरीके की इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जिसमें इंडस्ट्रियल टाउनशिप के अलावा रेजिडेंशियल का भी ज़ोरदार मिक्स है और अपने आप में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ समेटे ये टाउनशिप भारत में स्मार्ट सिटी का एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर रही है। तो 2 एपिसोड का ये सफ़र बेहद शानदार होने वाला है, जिसमें हम रिलायंस मेट सिटी, जो कि 8000 एकड़ से ज़्यादा में है, करीब 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा का स्ट्रेच है, अलग अलग सेक्टर्स में आपको लेकर चलेंगे, बताएंगे कि इसमें देश विदेश की कौन सी कंपनीज़ हैं, किस तरह के घर हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्यों ये इतनी खास है। तो आइए शुरुआत करते हैं स्पेशल सफ़र की। चौड़ी चौड़ी सड़कें, जहां न ट्रैफिक है न भीड़ भाड़, साथ में साफ सुथरा माहौल और सांस लेने के लिए बेहतर हवा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं और नजारा ऐसा जो दिल को छू जाए। राजधानी दिल्ली से बस 60 किलोमीटर दूर और गुरुग्राम से बेहद करीब हरियाणा के झज्जर में यह है रिलायंस मेट सिटी। KMP एक्सप्रेसवे के पास करीब 12 किलोमीटर के स्ट्रेच में फैला 8250 एकड़ से ज्यादा का यह विशाल लैंड बैंक इसे देश की सबसे बड़ी प्राइवेट स्मार्ट सिटी में से एक बनाता है। लेकिन किसी भी शहर को बसाना सिर्फ जमीन भरने का काम नहीं होता, जरूरत होती है एक सोची समझी प्लानिंग की, और मेट सिटी उसी प्लानिंग का उदाहरण है। 8250 एकड़ में फैला ये डेवलपमेंट सेक्टर वाइज प्लानिंग, वाइड रोड्स और ऑर्गेनाइज लेआउट के साथ एक व्यवस्थित इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार करता है। फिलहाल रिलायंस मेट सिटी का करीब 1/4 हिस्सा डेवलप हो चुका है, जहां इस वक्त टाउनशिप के अलग अलग सेक्टर्स में 12 अलग अलग देशों की 650 से ज्यादा कंपनियां आ चुकी हैं और लगभग 400 यूनिट ऑन ग्राउंड भी हो चुकी हैं। रिलायंस मेट सिटी में वैसे तो 650 से ज़्यादा नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लेकिन ख़ास तौर पे इस टाउनशिप के अंदर जापानीज़ कंपनियों का बोलबाला है। मेरे पीछे है पैनासोनिक, डेंजो, टी सुजुकी, ऐसे कई नाम हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ मौजूद कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और कंज्यूमर प्रोडक्ट के साथ साथ डिफेंस जैसे कई सेक्टर्स शामिल हैं। दिन रात चलती इन फैक्ट्रियों ने अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है और सिर्फ डायरेक्ट जॉब्स नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़े एंसिलरी बिजनेस, लॉजिस्टिक्स और सर्विसेज हजारों और अवसर पैदा कर रहे हैं। रिलायंस मेट सिटी की शानदार लोकेशन भी इसे खास बनाती है। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8 और KMP NCR से इसकी सीमलेस कनेक्टिविटी बनाते हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पास होने से यहाँ कार्गो मूवमेंट भी आसान है। साथ ही दिल्ली के IGI एयरपोर्ट भी यहाँ से सिर्फ 1 घंटे के अंदर पहुंचा जा सकता है। दूसरी तरफ फरूख नगर में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का निर्माण भी जारी है, जो न सिर्फ इस इलाके की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, बल्कि इसे देश की प्रमुख लॉजिस्टिक हब के तौर पर स्टैब्लिश कर देगा। इससे खास तौर पर यहाँ से होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी को काफी फायदा मिलेगा। आज मेट सिटी सिर्फ एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनता जा रहा है, जहां मल्टीनेशनल कंपनियां भारत को अपने प्रोडक्शन बेस के तौर पर चुन रही हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कितनी जल्दी शुरू हो सकता है उसका काम, और मेट सिटी में यही इसकी सबसे बड़ी खासियत बनकर सामने आती है। रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लग एंड प्ले मॉडल, जहां कंपनियों को सेटअप करने में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, यानी कम समय में शुरुआत और तेजी से बढ़ता प्रोडक्शन।
नई फैक्ट्री डालना चाहते थे। पुरानी फैक्ट्री हमारी नवरंगपुर में थी, वो रेजिडेंशियल एरिया में आ रही थी। तो हमने बहुत जगह ज़मीन देख रहे थे, तो रिलायंस मेट सिटी के टच में हम लोग तकरीबन 2 साल पहले आए और बातचीत शुरू हुई और उन्होंने बहुत फास्ट हमको लैंड वैंड दिखाना चालू किया और तकरीबन 18 महीने पहले हम लोगों ने बात की, डील की, ख़त्म हुई, ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू की। ग्राउंड ब्रेकिंग से फैक्ट्री चालू करने में सिर्फ 15 महीने लगे। तो इट वाज बहुत स्मूथ रहा पूरा ये जर्नी। बाकी कहीं भी जाते तो वो हम शायद 15 महीने वो कागजी कार्रवाई में ही फंस जाते। तो उसके लिए हमारे को, और बीइंग अ जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी, वो ब्यूरोक्रेटिक जंगल में ना फंसें, इसलिए हम यहाँ बहुत सुखी रहे। क्लीन काम, साफ काम और फटाफट काम हो। सवाल ये भी है कि कंपनियां मेट सिटी को ही क्यों चुन रही हैं? कारण साफ है, बेहतर कनेक्टिविटी, रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी सपोर्ट, इन सभी के साथ साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां बिजनेस को बढ़ने की पूरी सुविधा मिलती है। और शायद यही वजह है कि यहां डोमेस्टिक से लेकर ग्लोबल कंपनियां तक लगातार जुड़ती जा रही हैं। मेक इन इंडिया और चाइना +1 स्ट्रैटेजी जैसे ग्लोबल ट्रेंड्स का सीधा फायदा भी यहां देखने को मिलता है। अगर आप चाइना की सक्सेस देखें पिछले 30 से 40 सालों के बीच में, चाइना ने इसी तरीके के इकोसिस्टम को अडॉप्ट किया था जो आज इंडिया या मेट सिटी इस तरीके के इकोसिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, कि जहां पर किसी इंडस्ट्री को आके, वो भी ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ को आके, एक अप्रूवल के लिए, एक फैसिलिटी के लिए खुद ना दौड़ना पड़े। मेट सिटी में यू विल गेट वन शॉप सोल्यूशन, आपको सब कुछ एक साथ मिलेगा। दे विल गाइड यू हाउ टू डू इट। एंड यही रीज़न है कि चाइना इस पिछले 30 सालों में जिस तरीके से अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग में डेवलप किया, I think China +1, yes, it is very true right now. We are planning a very big investment happening in this place in coming 3 years. The reason is that government of Haryana is changing their policy and making more attractive for people investments to attract. तो एक ये reason है. Second, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, हमारे पास एक पूरा नो हाउ है पिछले 12-14 साल के एक्सपीरियंस का। और जिस तरीके से जो नई ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर आ रही हैं और उनको हम समझते हैं कि वो किस तरीके से आसानी से यहाँ पर फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश कर सकते, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीज़न होगा कि जो भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होगा, हमारी चॉइस झज्जर होनी है, मेट सिटी होनी है। किसी भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप की असली ताकत होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, और मेट सिटी में इसे फ्यूचर रेडी बनाया गया है। 220 केवी GIS सबस्टेशन के जरिए रिलायबल पावर सप्लाई दी जा रही है। अंडरग्राउंड केबलिंग सिस्टम और रिंग बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पावर सप्लाई को सिक्योर और अनइंटरप्टेड बनाता है। पानी के लिए एडवांस ट्रीटमेंट सिस्टम और रिसाइकिल वाटर नेटवर्क रिसोर्स एफिशिएंसी को सुनिश्चित करते हैं, और इन सभी सिस्टम्स के साथ साथ पूरी मेट सिटी को मॉनिटर करता है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। RIL मेट सिटी की खास बात यह है कि ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन प्लेस है। मतलब आप इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स देखते हैं, लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो पावर सप्लाई हो, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट हो, या फिर ओवरऑल सिक्योरिटी की बात हो। फॉर एग्जांपल, ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ICCC जो है, समझ लीजिए इस RIL मेट सिटी की आंखें हैं। यहाँ से एक ही जगह से पूरे 8000 एकड़ को, या अभी जितना डेवलप हो गया है, उसे एक साथ ट्रैक किया जा सकता है, देखा जा सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है, एक बार विजिट करते हैं हम इसके अंदर। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पूरे शहर की यूटिलिटीज रियल टाइम में ट्रैक की जाती हैं, और टाउनशिप की सुरक्षा का जिम्मा भी ये कमांड सेंटर ही उठाता है। लेकिन इन सारी सुविधाओं के बीच मेट सिटी में सस्टेनेबिलिटी का भी पूरा ख्याल रखा गया है, और ये एक प्लेटिनम रेटेड IGBC ग्रीन सिटी है।
यूजुअली किसी इंडस्ट्रियल टाउनशिप में आप जाते हैं तो आपका क्या अनुभव रहता है? ढेर सारा कूड़ा करकट, गंदगी, टूटी हुई सड़कें, फैला हुआ ऑयल, फैक्ट्रीज जहाँ से बदबू आ रही है। लेकिन रिलायंस मेट सिटी के अंदर तो बात ही कुछ अलग है। आपको लगेगा कोई लग्जरियस टाउनशिप के अंदर आप आए, जहाँ शानदार फूल खिले हुए हैं, एकदम शांति है, खुशबू भी आपको आती हुई मिलेंगी, किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं। ये इसको बिल्कुल अलग बनाता है। लेकिन मेट सिटी सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ये उभरता हुआ ग्रेटर गुरुग्राम है, जो भविष्य की संभावनाओं और विकास का नया केंद्र बन रहा है। ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ इंडस्ट्री और अर्बन लाइफ साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। रिलायंस मेट सिटी के इस सफर में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे रिलायंस मेट सिटी में न सिर्फ बड़ी बड़ी शानदार फैक्ट्रियां हैं, बल्कि अपने शानदार रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के साथ कैसे ये वॉक टू वर्क इकोसिस्टम के साथ लाइफ को इजी और स्मार्ट बना रही है। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज।
ब्रेक से पहले आपने देखा कैसे गुरुग्राम के पास हरियाणा के झज्जर में रिलायंस मेट सिटी देश में स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर एक स्मार्ट सिटी के तौर पर अपनी पहचान बना रही है। और अब देखेंगे कि कैसे रिलायंस मेट सिटी में शानदार रेजिडेंशियल ऑप्शन इसे रहने के लिए भी एक शानदार जगह बनाते हैं। मेट सिटी को डिजाइन किया गया है एक इंटीग्रेटेड लिव वर्क प्ले मॉडल पर, जहां इंडस्ट्रियल जोन्स के साथ साथ रेजिडेंशियल इकोसिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है। तो वैसे किसी प्रॉपर इंडस्ट्रियल टाउनशिप के अंदर एक प्रॉपर रेजिडेंशियल टाउनशिप का होना थोड़ा रेयर है, लेकिन रिलायंस मेट सिटी के अंदर ये काफी हद तक हो गया है। द हैबिटेट की बात करें तो ये एक प्रॉपर रेजिडेंशियल टाउनशिप है जो कि एक प्लॉटेड डेवलपमेंट है, और ये किसी भी रेगुलर प्लॉटेड डेवलपमेंट या टाउनशिप से किसी मायने में भी कम नहीं है। यहाँ प्लॉटेड डेवलपमेंट, प्रीमियम विला जोन्स और अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस तीनों तरह की हाउसिंग प्लानिंग का हिस्सा है। रेजिडेंशियल एरिया में 50% से ज्यादा स्पेस ग्रीन और ओपन रखे गए हैं। पार्क्स, जॉगिंग ट्रैक्स, स्पोर्ट एरियाज और कम्युनिटी स्पेसेस एक बैलेंस लाइफस्टाइल देने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव कम्यूट टाइम, जहां घर से वर्कप्लेस बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। यहाँ लाइफस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से विकसित हो रहा है। क्लब हाउस, स्पोर्ट फैसिलिटीज और कम्युनिटी स्पेसेस। शानदार आर्किटेक्चर वाली ये बिल्डिंग है रिलायंस मेट सिटी का क्लब और कन्वेंशन सेंटर। 65,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा में ये बन रहा है और ढेर सारी फैसिलिटीज इसके अंदर होने वाली है जो आपको किसी भी कन्वेंशन सेंटर के अंदर मिलती है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये होगी इसमें कि यहाँ पे जितने रेजिडेंसेस हैं वो तो इसका इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन जितनी कंपनीज़ हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस रूम भी इसके अंदर आने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक ही जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही स्कूल, हॉस्पिटल और रिटेल सुविधाओं के लिए डेडिकेटेड जोन्स प्लान किए गए हैं ताकि ये शहर पूरी तरह सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम बन सके। लेकिन मेट सिटी की असली पहचान सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि इसका सोशल इम्पैक्ट भी बहुत पावरफुल है। रिलायंस फाउंडेशन के जरिए आसपास के गांव में हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है। हेल्थ कैंप्स, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और आरोग्य क्लिनिक्स हजारों लोगों तक हेल्थ केयर पहुंचा रहे हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचे, उसमें भी रिलायंस मेट सिटी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। गांव वालों को गवर्नमेंट जो स्कीम अप्लाई करती है उनका पता नहीं होता कि क्या क्या स्कीमें आ रही हैं, तो मिशन सहयोग टीम उनके घर घर जाती है और उनको गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताती है। जैसे कि अभी ये दादरी तो ऐसे थे, इनकी लड़कियों की शादी थी, 2 लड़कियों की, तो उनको ये ही नहीं पता था कि भाई विवाह शगुन योजना भी कोई स्कीम है। तो उनके तहत इन्होंने क्या किया, उनका फॉर्म अप्लाई किया और उनकी शादी के दौरान उनको 62,000 रुपये दोनों, यानी 31,000 रुपये दोनों लड़कियों की शादी में उनको प्राप्त हुए। तो ये स्कीम इन तक पहुंचाने का काम हमारी मिशन सहयोग टीम ने किया। इसी के साथ साथ जैसे कृष्ण जी हैं, कुकडोला गांव से हैं, इनका परिवार सुरक्षा योजना के तहत इनका फॉर्म अप्लाई किया। इनकी पत्नी की डेथ हो गई किसी कारण से, तो इनको 3 लाख का सहयोग उससे मिला। तो इस तरह के काफ़ी सहयोग हमारी टीम कराती रहती है सर गाँव में। एजुकेशन इनिशिएटिव्स के जरिए बच्चों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। स्पोर्ट प्रोग्राम्स के जरिए गांव के बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं। रिलायंस मेट सिटी में घूमते घूमते शाम हो गई है और अब हम आ गए यहाँ के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर, जहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। बच्चे आ गए हैं, खेल कूद हो रहा है।
CSR इनिशिएटिव के तहत यहाँ ढेर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि यहाँ रहने वाले, यहाँ काम करने वालों की लाइफ को सीधा टच करती हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, चाहे उनके पढ़ाई लिखाई का मामला हो या उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का मामला हो, और ये इनिशिएटिव काफ़ी रंग भी ला रहे हैं क्योंकि इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। और यही बदलाव उनके भविष्य को नई दिशा दे रहा है, जहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ साथ बच्चों के सुनहरे भविष्य की भी नींव रखी जा रही है। जिन्होंने टोटल 58 मेडल डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और स्टेट लेवल पर जीते यहाँ के बच्चों ने। ये सभी बच्चे यहाँ के आसपास के गांव के बच्चे हैं। तो उनमें से कुछ हमारे 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10-10, 12-12 गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं एक ही बच्चे ने। सर मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल में 600 मीटर में और 400 मीटर में गोल्ड मेडल रहा है, और सर ब्लॉक लेवल में भी मेरा गोल्ड रहा है 600 मीटर में और ट्रायथलॉन सी में। सर हमारे आशीष सर है, वो हमें बहुत कुछ बताते हैं, डाइट के लिए भी बताते हैं और रनिंग में भी बताते हैं। कहीं सर बाहर जाते हैं तो फिर बताते हैं कैसे क्या करना है। मेड सिटी सिर्फ एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं है, बल्कि अपने आप में एक कंप्लीट स्मार्ट सिटी है, जिसकी तो अभी हमने सिर्फ एक झलक देखी है और आने वाले वक्त में यहाँ कई बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ अब रिलायंस मेड सिटी का ये सफर इस एपिसोड का तो यहीं खत्म हो रहा है। आई होप कि मैंने बहुत एंजॉय किया है, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरीके का एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप देखना, जो बेसिकली तो एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, लेकिन वहाँ पे रहने के लिए भी उतनी ही अच्छी स्पेसेस है, उतनी ही अच्छी सुविधाएं हैं, तो ऐसा कम देखने को मिलता है। वेल, इस सफर में हमने समझा कि ये कैसे रिलायंस मेड सिटी इस लेवल तक पहुंची है, आगे कैसे जाएगी, एक हाईटेक सिटी और एक स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन को जरूर तैयार कर रही है देश के अंदर। तो इस एपिसोड में जान लिया, अगला एपिसोड और खास होने वाला है, क्योंकि उसमें हम आमंत्रित करेंगे ऐसे शख्स को जिन्होंने इसकी परिकल्पना में भी हिस्सा लिया, जो इसे आज के इसके स्वरूप में लेकर आए, और आगे उनकी ढेर सारी प्लानिंग है कि कैसे इसे देश की वन ऑफ द टॉप इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स बनाया जाए, जहां इंडस्ट्री और लिविंग साथ साथ चले, और वो भी एक बेहतरीन तरीके से। तो अगले एपिसोड का जरूर इंतजार कीजिएगा। हम एक बार फिर लेकर हाजिर होंगे इंडिया रियल एस्टेट गाइड, रिलायंस मेड सिटी स्पेशल, और वो एपिसोड भी होगा बेहद खास। तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन, बाय बाय। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज।
नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। जियो प्लेटफॉर्म्स के बिग बैंग आईपीओ का इंतजार अब खत्म हो गया है। डिजिटल धुरंधर जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने आज कंपनी की 49वीं एजीएम में लिस्टिंग की टाइमलाइन को बताया, शेयर किया साफ साफ। कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का डीआरएचपी भी दे दिया है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह जियो ने टेलीकॉम में बड़ी क्रांति की है, वैसे ही वो बाजार में लिस्ट होने के बाद निवेशकों की वेल्थ क्रिएशन का जरिया भी बनेगा। डिजिटल इंडिया के पोस्टर बॉय जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ पर चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे इसमें निवेशकों के लिए क्या है, आगे ये किस तरीके से भारत के पूरे टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर एक तरीके से बदल सकता है। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। बीएसएनएल के पूर्व सीएमडी और समर के इंडिया हेड अनुपम श्रीवास्तव जी, ट्रोकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के डायरेक्टर पार्थिव शाह, एसएमआईएफ के रिसर्च हेड शरद अवस्थी और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ पर और विस्तार से बातचीत करें उससे पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसके डिटेल्स को। वैसे तो देखिए, डीआरएचपी फाइल हो चुका है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो जो रकम जुटाई जाएगी वो प्राइमरली इस्तेमाल होगी कर्ज चुकाने में। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक फ्रेश इशू है, ये ऑफर फॉर सेल नहीं है। यानी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो हैं, उनको ये प्रोसीडिंग्स नहीं जाएगी। लेकिन आशीष आ चुके हैं, उनसे समझते हैं इस आईपीओ की पूरी डिटेल। आशीष। बिल्कुल ठीक, विपिन जी कहते हैं ना एक अंग्रेजी में वॉक द टॉक। आपको याद है पिछले साल एजीएम में मैनेजमेंट में कहा था कि हम 2026 के फर्स्ट हाफ में एम कर रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म्स को लिस्ट करने की। लीजिए, जून में हम खड़े हैं और आज डीआरएचपी की फाइलिंग होती हुई। और जो बज है जियो प्लेटफॉर्म्स को लेकर, उसके अराउंड लेकर, समझिए ये कोई आम टेलीकॉम कंपनी नहीं है जो लिस्ट होने आ रही है, बल्कि एक मैसिव इंटरकनेक्टेड डिजिटल और टेक इकोसिस्टम है। और इस लिस्टिंग के थ्रू पब्लिक मार्केट का टेस्ट हो रहा होगा इस तरह की मैसिव ऑफरिंग के लिए। दरअसल एक डिजिटल कॉन्ग्लोमरेट है जियो प्लेटफॉर्म्स। समझाता हूं, हम लोग प्राइमरली इसको जानते हैं इसकी सब्सिडाइज्ड कनेक्टिविटी को लेकर, अफोर्डेबल 5G 4G डेटा, ब्रॉडबैंड वगैरह। पर ये डिजिटल सर्विसेज क्रॉस सेल करती है जियो सिनेमा, जियो टीवी जैसी सेवाएं। एंटरप्राइजेस के लिए क्लाउड, एआई, नेटवर्क सॉल्यूशंस मुहैया कराने का काम करती है। ग्लोबल टेक पार्टनरशिप्स हैं मेजर कंपनीज, मिसाल के तौर पे गूगल वगैरह के साथ, जिसमें अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स बनाने से लेकर डिजिटल सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए इस कंपनी ने करार कर रखे हैं। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जियो प्लेटफॉर्म्स के पास। ग्लोबली अनमैच्ड फिजिकल और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट है इस देश का। नंबर्स देखिए, आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एज ऑन मार्च 26, टोटल डेटा ट्रैफिक 241 एक्साबाइट्स। विपिन जी, मुझे तो साले समझ में ही नहीं आया था, तो मैंने एक्साबाइट्स को समझने की कोशिश करी। एक एक्साबाइट मतलब आप 1 बिलियन HD मूवीज स्टोर कर सकते हैं। 1 बिलियन, सिर्फ एक एक्साबाइट की बात कर रहा हूं मैं। सब्सक्राइबर्स 52 करोड़ से ज्यादा। 5G यूजर्स उसमें से 27 करोड़ के आसपास। 27 मिलियन होम्स कनेक्ट कर रखे हैं इस कंपनी ने। और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखिए FY26 के, साल दर साल आय 14-14.25% बढ़ी, इबीटा में तकरीबन 18% का जंप, और पिछले साल FY26 में मार्जिन्स 160 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए। क्या ड्राइव कर रहा है ये परफॉर्मेंस? इनका मैसिव 5G स्केल। पिछले साल 40% साल दर साल की ग्रोथ 5G में नजर आई। आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो इंप्रूव हो रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कंपनी स्मार्टली ब्रॉडबैंड को मोनेटाइज कर रही है। जियो एयर फाइबर होम कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। और इस कंपनी को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे जहन में वो है, आपको याद होगा वो मिड 2020s की बात, जब कोविड का प्राइम था, उस समय कॉर्पोरेट हिस्ट्री की, कॉर्पोरेट इंडिया की सबसे रिमार्केबल फंड रेजिंग्स में से एक हुई थी। 3 महीने के अंदर दुनिया के टॉप टेक जायंट से लेकर दुनिया की दिग्गज सॉवरेन फंड्स सब ने मिलकर इसमें खरीदारी करी थी, स्टेक्स एक्वायर करे थे। इनफैक्ट सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं।
पर वो लॉकडाउन के टाइम पे 33% स्टेक बेच के सबको मार्की इन्वेस्टर्स को चेक इन कराया था। और आज ये कंपनी जो अपना डीआरएचपी फाइल कर रही है, जैसे आपने मेंशन करा, 27 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑन ऑफर, सारे के सारे फ्रेश इशुएंस के जरिए, यानी कि कोई ये मार्की मौजूदा इन्वेस्टर एक शेयर इस ऑफरिंग में बेचता हुआ नहीं नजर आ रहा। और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि स्ट्रीट, मेरे ख्याल से आपके पैनल से आप चर्चा करोगे, सब मान के चल रहे थे ऑफर फॉर सेल होगा, ये पुराने इन्वेस्टर्स कुछ स्टेक रिड्यूस कर रहे होंगे, लेकिन सबको सरप्राइज करते हुए पूरी तरह से फ्रेश इशुएंस आपके सामने। डेफिनेटली ये सरप्राइज है। बाकी बहुत डिटेल में आशीष आपने बताया कि एग्जैक्टली व्हाई दिस इज नॉट जस्ट अ टेलीकॉम कंपनी आईपीओ, ये एक टेक जायंट का आईपीओ है जो अपने आप में एक अलग ही मुकाम हासिल करेगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन बिल्कुल जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त वो सुदीप सर यही कि ये ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। बिल्कुल सही विपिन जी, और जैसे आशीष जी ने कहा, हम लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन मार्केट में था कि ये मिक्स होगा ऑफर फॉर सेल और कुछ फ्रेश इश्यूएंस, पर अब देखिए ये पूरा फ्रेश इश्यूएंस है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंप्लीट जो डेट है वो रिपेमेंट हो जाएगा। लगभग 27,500 करोड़ का डेट रिपेमेंट होगा, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, जो प्रोसीड्स कंपनी को मिलेगा। तो ये अच्छी बात है, बैलेंस शीट और भी स्ट्रांग हो रहा है, डेट रिडक्शन डेट खत्म हो रहा है। तो उम्मीद ये है कि परफॉर्मेंस, जो मार्जिन परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव होगा आने वाले दिनों में। और ये सबसे बड़ा आईपीओ तो यही होगा। कल हम लोग बात कर रहे थे एनएससी का आईपीओ, सबसे बड़ा आईपीओ इंडिया का होने वाला है, और आज ये डीआरएचपी जमा होने के बाद लग रहा है ये डेफिनेटली इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ। आज तक जो आईपीओ हुए हैं उसमें से ये स्थापित होगा सबसे बड़ा आईपीओ बोल के। और एक खास बात है कि जैसे ही हम लोग ये डीआरएचपी देखना शुरू करेंगे, थोड़ा समझेंगे, और कंपैरिजन भारतीय एयरटेल के साथ शुरू होगा, और उस कंपैरिजन में वैल्यूएशन को इंप्यूट करना चालू करेंगे हम लोग, और उससे मुझे लगता है बहुत कुछ सामने आएगा और बहुत अच्छी तरह से वैल्यू डिस्कवरी होने की संभावना रहेगी। जी, तो आपने कहा कि कंपैरिजन होगा, बहुत अच्छी तरह से वैल्यू डिस्कवर होगी। अनुपम श्रीवास्तव सर है हमारे साथ, एक्स-सीएमडी बीएसएनएल। अनुपम सर, जैसा आशीष ने भी कहा, इनफैक्ट अभी संदीप जी ने भी कहा, वैल्यू डिस्कवर होगी, लेकिन उसका आधार क्या होगा? कि क्या ये एक सिंपल किसी टेलीकॉम कंपनी का आईपीओ नहीं है? जिस तरीके से जियो ने अपने आप को स्टैब्लिश किया है पिछले सालों में, वो एक टेक कंपनी से आगे बढ़ चुकी है, एक पूरा इकोसिस्टम बन चुकी है, और अब तो एआई का जो इंटीग्रेशन है, जिसपे दुनिया की बहुत सारी चीजें निर्भर कर रही हैं, वो भी अपने अंदर समावेशित कर रही हैं। तो क्या ये सब कुछ मिला के इसको एक स्टैंड आउट बना देगा, अलग थलग, मतलब अलग लेवल पे, अलग मुकाम पे खड़ा करेगा? ये देखिए, बिल्कुल तैयारी तो सिर्फ उसी की है, क्योंकि जो पहले हमारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट में टेलकोस कहलाते थे, अब आगे के समय में टेककोस कहलाएंगे। तो उनका काम सिर्फ मोबाइल सर्विसेज या ब्रॉडबैंड देना नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीओ के जरिए जो धनराशि इकट्ठी की जा रही है, उसका उपयोग टेक को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, एआई को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। और जैसा कि सुना जा रहा है कि बहुत सारे डेटा सेंटर्स, एआई बेस्ड डेटा सेंटर्स में इसका उपयोग करा जाएगा। और अगर आज शायद किसी ने वहाँ के चेयरमैन की स्पीच पढ़ी होगी, तो उनमें भी मेन फोकस एआई को आगे बढ़ाने का रखा गया है। भारत को एआई के फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए उनका उद्देश्य है, और डेटा सेंटर में फंडिंग करने का उनका उद्देश्य है। इनवीडिया की GB300 चिप्स, जो कि एक वन ऑफ द लेटेस्ट चिप्स अवेलेबल हैं H100 H200 के बाद, वेरा र्यूबिन के पहले का जो चिप्स है, वो लगा के एआई सिस्टम को बढ़ाया जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके जरिए ये टेलको का सफर टेक को एक टेक्निकल कंपनी और एक विश्व स्तर की टेक्निकल कंपनी बनने की राह में अग्रसर होगी। पार्थिव, वही सरप्राइज, उसी का एक और सवाल कि दिस इज अ फ्रेश ऑफर, ये ऑफर फॉर सेल नहीं है। और जैसा आशीष भी कह रहे थे और हमने भी कहा कि मेटा, गूगल, मुबादला, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर, लेकिन निकलने के लिए तैयारी, नॉट अ सिंगल शेयर। व्हाट डज इट मीन कि वो अभी भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी जियो के अंदर देख रहे हैं?
एब्सोल्युटली एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम के पार्टनर्स है जैसे कि मेटा है, गूगल है, दे वांट टू बी विद दिस ग्रोथ स्टोरी। और वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जो हम एआई इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं पूरे जियो प्लेटफॉर्म्स में, वो अभी जस्ट शुरू हुआ है। बेसिकली इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बिकॉज आज की तारीख में जो भी हम 75,000 करोड़ का एबिटा बिजनेस जियो प्लेटफॉर्म का देख रहे हैं, दैट प्रीडोमिनेटली कम्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल टेलीकॉम सर्विसेज। और जिस तरह से चेयरमैन साहब ने और डेफिनेटली आनंद सर ने बताया कि किस तरह से एआई एजेंट्स और एआई का पूरा इंटीग्रेशन होगा, एंड एआई नॉट ओनली फ्रॉम एंटरप्राइज स्टैंड पॉइंट, उनको ऐसा चाहिए कि जियो प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो एआई का पेनिट्रेशन है दैट शुड बी टोटली डेमोक्रेटाइज, वेदर इट इज फार्मर्स, वेदर इट इज प्लम्बर्स, एनीबडी इट मे बी। इनका जो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट है एआई के थ्रू बहुत बड़े पैमाने पे होना चाहिए। और जिस तरह से रिसेंटली हमने अनाउंसमेंट देखी कि मेटा और रिलायंस एक डेटा सेंटर की बात की है, जैसे हमने देखा गूगल भी काफी टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात कर रहा है, काफी R&D स्पेंड्स की बात कर रहा है। जियो प्लेटफॉर्म इज उनका जो रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल रैंकिंग ऑफ इनोवेशन, वो 20th स्तर पे आया है, जहां पे उन्होंने बहुत सारे पैटर्न्स आई थिंक रजिस्टर किए हैं। गोज टू शो कि ये स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। और एक बहुत बड़ी आई थिंक जो गाइडेंस चेयरमैन सर ने दी है इन टर्म्स ऑफ आने वाले 5 साल में जो पूरा ग्रुप लेवल का एबिटा है जो अराउंड अभी 2.7 लाख करोड़ है, उसको डबल करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर विल बी जियो प्लेटफॉर्म्स। तो उस लिहाज से आई थिंक ये हर एक पार्टनर्स को ये ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रखनी है। मुझे लग रहा है कि आईपीओ के द्वारा काफी नए ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी आएंगे, तो आई थिंक डेट फ्री कंपनी हो जाएगी ऐसा दिख रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स डेफिनेटली भारतीय एयरटेल से जियो प्लेटफॉर्म्स को काफी अच्छे मल्टीपल्स मिलेंगे, बिकॉज ग्रोथ विजिबिलिटी ऑफ न्यूअर बिजनेसेस इज देयर, जहां पे आरपो इंक्रीज होने की काफी क्षमता दिख रही है। राइट शरद, तो देखिए अनाउंस कर ही दिया कंपनी ने कि वो पूरी जो प्रोसीडिंग्स है उसमें से 27,500 करोड़ रुपए जो अपना एग्जिस्टिंग डेट है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और बाकी प्रोसीडिंग्स कॉर्पोरेट दूसरे चीज़ों के लिए जाएगी। क्या ये पैसा अगर एआई एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए लगता वो बेहतर होता है, या आप डेट क्लियर करें और आपके पास बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हैं और बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे जैसे पार्थिव कह रहे थे, तो एक निवेशक के लिहाज से इसे कैसे समझे? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में रिलायंस के डेट लेवल्स को लेके बीच बीच में अनिश्चितताएं बनती रही हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि आपका डेट एक बार रिपेमेंट हो जाता है। और अब जियो प्लेटफॉर्म्स का जो मेन बिजनेस है आपका टेलीकॉम सब्सक्राइबर का और इसके अलावा जो एफटीटीएच का, मेरे हिसाब से ऑलरेडी वो कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया है। तो जो खर्च हम लोगों को एआई वगैरह पे करना है और इंटीग्रेशन पे और प्लेटफॉर्म बिजनेस में थोड़ा बहुत कैश बर्न हो सकता है, तो वहाँ जो जरूरत है मेरे हिसाब से, चूंकि जियो जो टेलीकॉम वाला सेगमेंट है वो ऑलरेडी मैच्योर हो गया है, प्लस मेरे हिसाब से एफटीटीएच में आने वाले समय में और इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। आरपू इम्प्रूवमेंट का सबसे ज्यादा स्कोप भारतीय और जियो में अगर आप कंपेयर करें तो जियो में है, तो वो और कैश फ्लो पॉजिटिव होगा। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट वही चीज प्रीएम्प्ट कर रही है कि ये डेट रिपेमेंट पे यूज कर लेना उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि काफी बड़ा हिस्सा उसमें निकल जाता है और जो कैश फ्लो जनरेशन होगा वो इनके लिए काफी होगा नए वेंचर्स में पैसा लगाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए उनको फ्रेश इन्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, चूंकि ये बिजनेसेस अब मैच्योर हो गए हैं और अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि टेलीकॉम बिजनेस लार्जली टॉप लाइन टू बॉटम लाइन कन्वर्जन मैन्युफैक्चरिंग की तरह नहीं है, सर्विस ओरिएंटेड है। तो स्केल जैसे जैसे बढ़ता है उसका सीधा फायदा आपको बॉटम लाइन और कैश फ्लोज पे आता है। तो मुझे लगता है प्लानिंग वही है कि वो जो पैसा कैश फ्लो में जनरेशन होगा लगातार, वो मोर देन एनफ होगा एआई वगैरह और जो नए वेंचर्स में इनको फोकस करना है विद इन जियो प्लेटफॉर्म्स। राइट तो और भी बहुत सारे सवाल हैं जो एक इन्वेस्टर के मन में आएंगे कि क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू अनलॉक करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज की और खुद की भी, और साथ में अब क्या ग्रोथ के नए मॉडल्स होंगे 5G और आरपू के अलावा। कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल इस आईपीओ के इर्द गिर्द। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बातचीत जारी रहेगी। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज।
वेलकम बैक। तो आ रहा है जियो का बिग बैंग आईपीओ अनाउंस हो चुका है, डीआरएचपी दाखिल हो चुका है। 27 करोड़ शेयर्स का फ्रेश इशू होगा ये, और प्रोसीडिंग्स को कंपनी मेनली अपना कर्ज उतारने में इस्तेमाल करेगी। तो ये जानकारी है इसके बारे में, और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब क्विकली, क्योंकि समय कम रहेगा, कुछ सवाल अपने मेहमानों से जल्दी जल्दी। अनुपम सर, ये बताइए कि देखिए, जैसा अभी भी जिक्र हो रहा था कि टेलीकॉम बिजनेस जो प्योर टेलीकॉम है वो एक हद तक मैच्योर हो गया, आरपूज हो गए, 5G हो गए, ये सब हो गया। नए एवेन्यूज कहां मिलेंगे कंपनी को ग्रोथ के लिए? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, नए एवेन्यूज तो आपको एयर फाइबर जो है